तो आगु को जीवा आगु किछिटा मु आपनको इन्फॉर्मेशन देवी हमर जो फाउंडेशन बैच और सेमेस्टर कोचिंग पे अपन देखुछंदी ओडिशा जुडिशियल सर्विस की जो भी स्टेट रो जुडिशियल सर्विस हो किंबा हायर जुडिशियरी एग्जाम्स करिका हो सेथरे आपनकर बेसिक लेवल टा किंबा फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग टा क्लियर हेतिबा दरकार जदि सेटा नहीं ताहले आपनको जहाँ भी हेले टिके इश्यूज हबो केते केते पिला अपन देखथिबे ताकू बहुत टाइम लागि जाय ओजेएस क्रैक करिया पई गोटे सेथरे जिंस थाय कि से माने जते बेले लॉ स्कूल रे पढुतांती तो ड्यू टू वेरियस रीजंस तांकर फाउंडेशन ता क्लियर ही न थाय लॉ रे ओके तेनु एज अ रिजल्ट सेटा परे तले आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम करिका दउचंती ओजेएस हला कि अलगा लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेथरे आपनको प्रॉब्लम होची ओके तेनु सेही सबु जो स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रोची कि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ता दरकार अछि कोर्स रो ओके लॉ रो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रो तो सेथि पे हमर ई फाउंडेशन बैच हो सेमेस्टर कोचिंग ए पार्ट हमर रोची ओके इट इज डिफरेंट अपन जदी कहबे ताले हमर जो ओजेएस बैच रोची ताठो एटा अलगा तो कौन डिफरेंसेस रोची और एई बैच ता कहा पाई एठी कौन फैसिलिटीज आपन को रोची दैट आई विल डिस्कस विथ यू तो एई बैच ता हमर जो माने क्लासरूम रे करिया पे चाहउचंदी भुवनेश्वर रो खंडगिरी सेंटर रे ही एटा रोची तो सेठी आपण क्लास रे आसी क्लासरूम रे कर परिबे 6 टा रु 8 टा रो टाइमिंग रोची संध्या बेले मींस आफ्टर योर कॉलेज टाइमिंग ओके एडवांटेज कोन रोची रीडिंग रूम आपण को मिलिबो सेठी विथ वाईफाई फॉर यू नो क्लासरूम स्टूडेंट्स तो आपण जदि किछि पढा पढी करिया पे चाहउचन निजरो ताले भी जाकी लाइब्रेरी रे बसी के पढी परिबे रेगुलर आंसर प्रैक्टिस रहबो आपण कांसेप्ट ता बुझायला आपण पूरा बुझिले तापरे हमें किछटा टेस्ट भी ता ऊपर वीकली आउ ओके मॉड्यूल एंडिंग टेस्ट करिका रहबो बेसिक लेवल रो स्टार्ट हो मु किछि जानली लॉ ऊपर तथापि ओके मो पा क्वालिफिकेशन अछि तेनु मते बेसिक्स टू पढिबार अछि तो एठु हमें बेसिक रो स्टार्ट करी कि पूरा एडवांस लेवल माने जोठी कि आपनकर सेक्शन वाइज किबा कांसेप्ट वाइज इंपोर्टेंट केसेस प्लस आपनकर लीगल मैक्सिम्स सेगुडा भी हमें कवर करूछु एठी आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस रहउची कि जेतु एटा मॉड्यूल वाइज माने गोटे गोटे सब्जेक्ट गोटे पेपर वाइज हमें कंप्लीट करिवो ईच पेपर पे आपनकर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी एथरे रहउची ओके जो माने जॉइन करचंती क्लासरूम रे तो ऑब्वियसली फैकल्टी संगे डायरेक्टली इंटरेक्ट करि परिबे जो माने ऑनलाइन भी जॉइन करचंती गूगल मीट थ्रू रे आपण जहां भी डाउट्स पचारि परिबे आपनकर वॉइस रे ओके आउ आपनको इंटीग्रेटेड ऐप सपोर्ट भी मिलिबो डिफरेंस कौन रोची जुडिशियल सर्विस बैच रे ओई बैच रे जुडिशियल सर्विस बैच रे एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ा हुए जेंति कि तेरे प्रीलिम्स रो 15000 टा क्वेश्चन अछि जेटा प्रीवियस ईयर रे सब पढिछि मेंस रो 12 वर्ष रो सॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व्ड आंसर्स अछि आपनकर सब पेपर्स रो ओके सेटा एप्लीकेटिव एग्जाम ओरिएंटेड सेटा रहउछि और जो भी फैकल्टीज पढौचंती से माने भी एग्जाम को देखि पढौचंती कि हां एई जिंसोडा परीक्षा रे पढिबो वेरएज एही बैचेस रे कोन ना हमें फाउंडेशन टा क्लियर करछु तेनो आरो स्कोप टा बेसी ब्रॉड ठीक अछि आरो स्कोप टा बेसी ब्रॉड तेनो एटा आपनकर जो माने आगु जुडिशियरी देबे ताको पई भी दरकार हबो आउ जो माने जुडिशियरी पे इंटरेस्टेड नांती आपण आगु को जाई कि आपण प्रैक्टिस करिवे लीगल प्रोफेशन रे जिबे किबा अलगा कोनोसी एग्जाम पई आपण इंटरेस्टेड अछंती क्लैट पीजी देबे यूजीसी नेट देबे से सब एग्जाम्स पे जो बेसिक्स उडा आपण क्लियर हवा दरकार सेटा आपण ओके एई बैच रे आपण पाई जिबे सो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज होची सेमेस्टर और फाउंडेशन बैचेस रे पूरा जीरो लेवल रु हमें या भाबी कि चलछु पिला लॉ विषय रे किछि जान नांती ओके सेही हिसाब रे सेठी पढाउछु देन इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस क्लास टाइम रे तो सेठी डाउट क्लियर करिवे आ जदी ता परे आपण डाउट्स असला ताले आपण ऑनलाइन भी कर परिबे सेटा व्हाट्सएप थ्रू रे आ हम ऐप थ्रू रे भी कर परिबे ओके तापर 24/7 सपोर्ट आपण को रहउची जोडा इन द सेंस जा भी डाउट्स हला आपण व्हाट्सएप थ्रू क्लियर करि परिबे वाईफाई स्टूडेंट वाईफाई आपण को जो पर्यंत इंस्टीट्यूट रो टाइमिंग रहउची आपण जाई कि सेठी ओके स्टडीज वरिका करि परिबे लाइब्रेरी रे तापर क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपण को रहउची जो जो मॉड्यूल आपण को आपण जॉइन करचंती तार प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलिबो आपण ऑनलाइन रे जॉइन करले भी आपण आसी सेटू कलेक्ट कर परिबे रेगुलर टेस्ट आपण को रहउची आ आंसर राइटिंग ऊपर सेठी फोकस रहबो सो दैट आगु आपण जदी ओजेएस करिका देबे भी आपण एथरे पूरा रेडी हे कि रहबे ओके तो डिटेल्स कोन अछि ए पर्टिकुलर कोर्स रो तो
रिक्वायरमेंट आपण जो पर्यंत मतलब 3 मास पे दरकार 6 मास पे दरकार 3 वर्ष पे दरकार तो आपण डिपेंडिंग आपण को केते टाइम पर्यंत दरकार यू कैन जॉइन ओके एथरे आपणकर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऐप एक्सेस लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जो क्लासटा हैला गोटे दिन पर सेटा पुनी तार रिकॉर्डिंग टा आपन को ऐप रे अवेलेबल तेणु आपण ताको रिवाइज करिया पे चाहउछन से क्लास रे कोन गोटे कुआइतला मो लेखि पारलिनी भूलियली तो सेगुडा सब आपण कर परिबे टेस्ट सीरीज रहइबो आंसर राइटिंग रहइबो आ तार फीस रहउची 2000 पर पेपर किबा पर सब्जेक्ट ओके अब हमें स्टार्ट करूछु एटा एविडेंस एक्ट रु और बीएसए रु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रु ठीक अछि 24 तारिख रु एटा स्टार्ट होबो ओके मार्च 24 जो मैंने ऑफलाइन जॉइन करेंगे क्लासरूम रे जॉइन करेंगे से खंडगिरी सेंटर रे जॉइन कर परिबे टाइमिंग आपन 6 to 8 6 days a week वेडनेसडे हमर छुट्टी थाए आउ बाकी सब दिन इंक्लूडिंग संडे भी आपन क्लास रहइबो जतरे टेस्ट भी आपन वीकली टेस्ट करिका भी रहउछ आउ जो माने दूर रे अछंती किंतु कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहउछंती बिफोर गोइंग टू यू नो हायर लेवल एग्जाम्स ताले आपन ऑनलाइन रे भी जॉइन कर परिबे ओके 6 टा रु 8 टा आपन ऑनलाइन रे भी जॉइन कर परिबे राइट ता बाद आपण जदि ओजेएस किंबा अलगा टेस्ट सीरीज करिका देबे ता पई हमर सेंटर्स अछि कटक रे बेसिकली आपण जते टेस्ट सीरीज करिका अछि आपण कटक रे रहउचंदी सेल्फ स्टडी करचंदी कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर सारचंदी प्रीलिम्स टेस्ट देबे मेंस टेस्ट देबे तो सेगुडा आपण कटक सेंटर रे दे परिबे भुवनेश्वर शहीद नगर एठी हमर मेनली ओजेएस बैचेस उडा जा सेगुडा कंसंट्रेटेड रहउची भुवनेश्वर शहीद नगर रे आउ एई जो सेमेस्टर बैचेस उडा एटा हमर रहउची भुवनेश्वर खंडगिरी रे टेस्ट करिके जदि देबे तीनटा सेंटर रे जोठी भी आपण दे परिबे ओके सो केमिति जॉइन करिवे 7684054656 सेथरे आपण जॉइनिंग डिटेल्स पाइ जिवे ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट डिफरेंस आउथरे कहि दउची ओजेएस बैच रे हमें स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड से बैच ता रहउची जो थरे कि ओजेएस रे जो टाइप रो क्वेश्चन पडुची ता ऊपर हमें फोकस करूछु फाउंडेशन बैच रे सेटा आपनकर बेसिक लॉ पेपर टाको पूरा वाइड स्कोप रे कवर कराउछ ओके फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबी कॉन्स्टिट्यूशन रे जुडिशियल सर्विस रे हमर पार्लियामेंट पड़ेनी तेनु प्राय जते हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढौछु ओजेएस पई वी आर नॉट डीलिंग विथ पार्लियामेंट इन डिटेल्स बट फाउंडेशनल कोर्स रे सेटा पूरा डिटेल रे पढाओ ठीक अछि तेनु स्कोप ऑफ फाउंडेशनल पेपर और फाउंडेशनल और सेमेस्टर कोचिंग इज मच ब्रॉडर as compared to your exam specific OJS coaching बुझिपाल सो आई विश यू ऑल द बेस्ट आपनकर जदी फाउंडेशन स्ट्रांग अछि जो भी एग्जाम आपण इजीली क्रैक करि परिबे लॉ रो सेटा आपनकर नेट हो कि क्लैट हो कि यू नो आपनकर एनी अदर स्टेट रो जदी आपण हिंदी भी जानि जंदी ताले नॉर्थ इंडियन जते स्टेट्स अछि सबुरो आपण जुडिशियल सर्विस भी दे परिबे ओके सो बेस्ट विशेस नाउ वी विल कंटिन्यू विथ द क्लास Okay, namaskar all of you. So today we will start with your Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Okay, कि जोटा हमें कहि परिबा आपनकर Indian Evidence Act रो okay नुआ फॉर्म ता that we can say. Now, we start किछटा basics मु clear कर देबी how we will be going through this batch and all से सब जिनसोडा केमती आपनकर जानिबा दरकार तो जहा क्लास रे हमें डिस्कस करूछु ओके same day you have to go through some questions related to that जहा भी पढ़ा हला ओके आज बेसिकली एटा गोटे आपण कहि परिबे इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन क्लास राइट बेसिकली जहा भी हमें पढुछु ओके सेम डे रे आपण को किछटा तार हम टेस्ट कहबिनी बट गोटे टाइप रो क्विज दबा पई पड़िबो जहा भी पढ़ा हला ओके सेटा आपण आपणकर डेली टेस्ट गोटे फोल्डर अछि आपणक ऐप भितरे से डेली टेस्ट अंडर रे जाई कि आपण पाई परिबे कि कोनटा टेस्ट आपणकर से दिन रो दबार अछि ओके आई विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो इन द क्लास जहा पढ़ा आइछि ओके सेही रिलेटेड ही आपणकर रहिबो क्वेश्चंस खरिका ठीक अछि दैट इज वेरी इंपोर्टेंट काहे ना आस्ते आस्ते जो माने स्पेशली नुआ स्टूडेंट्स अछंती ओके से माने ठीक रे जिंसोटा
बुझी पारछन्ती कि नहीं सेतरे हम एटा जान परिबा ओके तो दैट इज वन थिंग तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द ऐप रे जाके आपण ओके देखि परिबे से गोटे डेली टेस्ट टाइप रो गोटे सेई नारो फोल्डर थिबो ठीक अछि आउ से टेस्ट गुड़ा कौन रहबो ना प्री रो टेस्ट गुड़ा सेगुड़ा आपणकर ऑनलाइन टेस्ट रहबो जोथरा आपण रैंक भी आसी जिवो सेतरे ओके सो दैट पार्ट विल बी देयर ठीक अछि एंड देन गोटे की दीटा क्वेश्चन रहबो आपणकर दैट इज फॉर योर कोन जोटा की मेंस ପାଇଁ ठीक अछि सेटा गोटे जिंस सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आमे पैटर्न टा टिके जानिबा हमरो केमिति कोन एग्जाम रे क्वेश्चंस पडुछि ओके ओवरऑल भी what are the expectations okay of the um, OPSC okay for OJS or other exams भी कहीं ना एथरे आपणकर कॉन्सेप्ट क्लियर हे गले एविडेंस एक्ट रे ओके जोटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे देन अदर एक्ट्स ठीक अछि आपनको बहुत इजी होबो सेटा पढिया पे काहे ना फंडामेंटली जेतले हम स्टार्ट भी करूछु ओके गोटे पिला लॉ पढ़िया प्रथम स्टार्ट करूची से जनरली एविडेंस एक्ट रे स्टार्ट करे तार कारण है कि विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ एविडेंस ना ही आपण सिविल साइड रे किछि पढ़ी परिबे आ प्रॉपर्ली ताको एप्रिशिएट कर परिबे ना आपण क्रिमिनल साइड रे ओके पढ़ी की किछि एप्रिशिएट कर परिबे राइट बट हमरो को टाइप रो क्वेश्चंस पढुची दैट आल्सो वी नीड टू नो okay what type of questions we are getting so এই বর্ষর क्वेश्चन ମୁଁ first start କରୁଛି okay এই ବର୍ଷରେ जो ଆପଣଙ୍କ 2023 ରେ जो क्वेश्चंस ଆମର ଆସିଥିଲା right 2023 ର I'll only be sticking to the questions of your evidence act okay evidence act ର जो क्वेश्चन पड़थिला काहे ना एई वर्ष पर्यंत तो आपनकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके सेटा टेक्निकली आम कहि परियानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आसीथिला ओके इट वाज इंडियन एविडेंस एक्ट एई वर्ष टू मे बी से माने बट दैट आल्सो दे हैव सेड दैट बोथ आपनकर आसीबो ओके तो आपण जदी पुराना पिला जो माने अछंती जो माने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ी देन यू कैन कंटिन्यू विथ दैट ओके से तरह से किसी प्रॉब्लम नहीं राइट सो जस्ट लुक एट दिस इयर्स क्वेश्चन एमती तो आपणकर सबु वर्षर क्वेश्चंस आमे डिस्कस करिबा ओके बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन एई वर्षर पैटर्न टा केमती थिला ओके सेटा टिके आपण जानंतु I will just present in on your screen okay so let us see PC part task now let us go to evidence
ओके तो येउठु आपनकर आछि क्वेश्चन नंबर 9 ओके so you see the pattern आउ आमको लेखिबार केमती अछि तो सेटा मु फर्स्ट क्लास रो एटा एथि देखौची सो दैट यू नो कि एग्जाम रे तांकर रिक्वायरमेंट कोन अछि हैला सो दैट यू कैन इजीली राइट अकॉर्डिंगली अपन जो क्लास रे लेखिबे जो आंसर्स गुडा एगुडा से हिसाब रे अपन को लिखिबार अछि ओके सेक्शन सी you see first question della apanakara write a detailed note on privileged communication under the provisions of Indian Evidence Act 1872 15 mark ro question ଦେଇଛି so you know ପ୍ରଥମରୁ ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରୋସିଜରାଲ पेपर ଟା ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ पेपर ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ मे बी ଟିକେ टाइम कमी पारे ओके टाइम आपणकर कम हो पारे अदरवाइज अलग सब पेपर्स रे आपणकर टाइम कमीबनी प्राय अनलेस यू डू मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम एथरे कहीं ना यू नो दैट 150 वर्ड्स रे आपनको 150 मार्क्स और 150 मिनिट्स आपनको मिलिबो माने 1 मार्क बाय 1 मिनिट एठी एटा 15 मार्क रो क्वेश्चन देला राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एटा आपण कोठी पाइबे आपन ऐप रे जिबे जोटा प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड आंसर्स अछि ओजेएस अंडर रे जिबे लास्ट 12-13 वर्षर माने 2012 रु 2023 पर्यंत सब गुड़ा सॉल्व हेकी अछि प्रथमे गोटे जस्ट हैव ए ग्लैंस ऑन दोस ओके केमिति आंसर ता लिखिबार अछि बट सेटा भी मु गोटे कथा कहि दिए ଆପଣ ମଡେଲ ଆନ୍ସର will give you the direction ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଭଳିଆ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ପସିବଲ ହୁଏନି ଠିକ ଅଛି ତ ସୋ ଡୋଣ୍ଟ थिंक दैट कि हम मॉडल आंसर भलिया आंसर लिखि देबी चेष्टा हमें से ही करबा काना एते कम समय रे ओके तो देखो से कोन कला डिमांड ऑफ क्वेश्चन डिटेल्ड नोट से कहूच ऑन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ओके अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट कोन लिखिबे किछि कहनी what are the ingredients what are the exceptions important case laws important maxims कोन लिखिबे आपण 15 मार्क ओके सो दैट इज so it's a very open ended question ठीक अछि आउ 15 मार्क्स देछि तो 15 मिनिट्स रे आपण को लिखिबार अछि so that you have to keep in mind okay so एटा तारो इंट्रोडक्शन ता देखंतु okay you go through it you read it okay but the thing is that you can never write such a long introduction दी लाइन रु 3 लाइन रु अधिक जदी आपण नउचंदी ताहले आपण को डिफिकल्ट हो पेपर सारिया पई स्पीड केते रहइबो आपणकर योर स्पीड हैज टू बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25 वर्ड्स पर मिनिट पेपर भलरे सारिया को हेले एई स्पीड ता आपणकर राइटिंग स्पीड निहाती रहइबा दरकार ठीक अछि तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देला प्रिविलेज कम्युनिकेशन अर्थटा बुझेला ठीक अछि तापरे टाइप्स ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट देला देखो से केमती पॉइंट वाइज लिखुची इलस्ट्रेशन दउची ओके तापरे आउ कोन कोन इंपोर्टेंट जिंस एथरा आपन लिखियार अछि से किछि हमकु कहूनी कि कोन कोन तुमे लिखिबो प्रिविलेज कम्युनिकेशन विषय तो हम डेफिनेशन दे देलु प्रिविलेज कम्युनिकेशन रो ओके आमे तापरे तारो अलगा डिटेल्स उडा दउछु सेक्शन वाइज ओके तो जेमति कि एटी पॉइंट्स उडा बहुत इंपोर्टेंट जोडा कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स रे आपन को लिखिबार अछि बहुत पिला कोना सेने पूरा जानि थांती भलरे बुकटा पढी चंती नॉलेज अछि बट दे विल राइट इट इन प्रोज रे जेमति देखंती ना सेही टाइप रो पूरा बहुत गुडे जिंस लिखिबे किंतु सेटा को प्रॉपर्ली डिवाइड करिवेनी इनटू हेडिंग्स सब हेडिंग्स एक्सेट्रा जदी सेही जिंसटा आपण करूचंती ताले आपणकर बेसी मार्क्स आसीबनी ओके सो मैरिटल प्रिविलेज ठीक अछि तापरे तार जहाँ पॉइंट आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कंटेंट ऑफ द आंसर बिकॉज ऑब्वियसली हम एटा पढिनु आज फर्स्ट क्लास हैला किंतु लेखा केमती हबो सेटा देखंतु एक्सेप्शंस भी से दउची
illustrations भी से दौची. Okay, more importantly, okay, what is the evidentiary value of privileged communication? Okay, what are the issues or criticisms and challenges? Legal maxim देला बहुत important. Okay, landmark और recent cases दौची आपनकर. तमने 5-6टा headings रे मते total लेखिबार अछि. आउ सबुठु मोस्ट इम्पोर्टेंट हैला ए जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एटा सबु बेले ओके माइंड रे रखिथिबे. डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल नोड कोन, ठीक अछि, कनेक्टेड नोड्स कोन, एरोज कोन. तो आज फर्स्ट क्लास रे मु बेसिकली तारी ऊपर आपन को कहबी. ओके, आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज योर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. ओके, एटा गला 15 मार्क रो देथिले. हमर ईच क्वेश्चन अपन जानछन 25 मार्क रो आसे. 6टा क्वेश्चन आसे. सो 25 into 6 150 मार्क्स अपन अटेम्प्ट करिवे. सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स ओडे प्रॉब्लम देछि. यू नो सेटा मु कहबी प्रॉब्लम्स केमती हैंडल करंती. वी हैव ए फॉर्मेट. ओके, गोटे स्ट्रक्चर रे अपन को प्रॉब्लम टा लिखिबार थाए व्हिच इज नोन एज FIRAC. ओके, फिराक स्ट्रक्चर तक हमें कहउचंती जोतरे फैक्ट्स, F for facts, I for issues, R for rules and acts की regulations जोटा applicable होबो. A हैला applicability to that particular question. और C हैला ओके जोटा कि आपण कंक्लूजन कहि परिबे किंबा जोटा आपण you will give the judgment. Okay, what should be the judgment. ठीक अछि. So डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेटा ठीक रे आपण बुझिबार अछि. एटा 5 मार्क नु 5 मिनिट रे सारीबे. ठीक सेमती बिट सी देछि इंटरेस्टेड विटनेस किए. राइट ए नोट ऑन इंटरेस्टेड विटनेस 5 मार्क्स. ठीक अछि, 5 मिनिट्स मध्ये सारीबार अछि. आपण एटा 15 मार्क क्वेश्चन भी पढी पारे. ठीक अछि, राइट ए यू नो a short note or write a detailed note on interested witness. तेणु गोटे जिनस मन रखिए ये जो दिया है आपणकर आंसर टा सेटा एई हिसाब रे दिया है कि सेई पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर आपणकर नॉलेज टा बहुत प्रॉपर हबो ना कि आपण 5 मार्क खाली 10 लाइन लिखि दे के आसीबे. सेटा तो हमको परीक्षा रे करिवार अछि. बट मॉडल आंसर रे बहुत डिटेल्स. फॉर एग्जांपल से डिस्टिंक्शन देछि इंटरेस्टेड आउ रिलेटेड विटनेसेस. ओके, सो तार इंपोर्टेंट केस लॉ देछि सेगुडा आपण को बुझिया पई. किंतु 5 मार्क क्वेश्चन पई कोन हमें केस लॉ दबा ना हमें गोटे डायग्राम करिवे. ओके, सेगुडा किछ करिया पई. तो सेटा कालक्रमे जतले हमें once we go to the different parts, okay, I will tell you केमती कोन लिखिबार अछि. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. Write a detailed note on best evidence rule under Indian Evidence Act. Okay, again pura direct question. All the questions this year, okay, were more or less direct. 2023 रे at least evidence law जदि मु कहबा Indian Evidence Act रो. Okay, so what is the importance of best evidence rule? एगुडा आमे जानिले 10टा पॉइंट आमे ताको 4-5टा लिखि परिबे. कुछ पहले and proper conclusion and diagrammatic representation. Any question which is more than 10 marks or 15 marks सेठी डायग्राम कर देबा पे पड़िबो. Write note on patent and latent ambiguities. Okay, patent और latent ambiguities ऊपर. So this is how you know. तो एटा एई वर्ष रो माने 2023 रो जार रिजल्ट मोस्टली आज आसी होते. ओके, बट एनीवे 15 तारिख भीतर आसी रिजल्ट, राइट. So तापर देखंतु difference between patent and latent ambiguities, challenges in resolving the ambiguity, what are the issues. Okay, सेवळे से किछि पचारनी किंतु आमे पूरा डिटेल्ड वे रे सेटा आंसर करूछु सब पॉइंट्स को नै कि. ओके, बट that also remember कि you will not be able to write everything. किंतु नॉलेज आपनकर सेति कि जदि रखुचंदी आराम रे तापर आपण आंसर दे परिबे. डाइंग डिक्लेरेशन कोन, what is dying declaration, what when it is admissible in evidence, discuss its evidentiary value. Okay, एटा बहुत थोरो रिपीट है, बहुत थोरो रिपीट है एटा. ओके, किंतु एठी आपनकर देला फॉर्म्स कोन अछि आपण डाइंग डिक्लेरेशन. ओके, evidentiary value कोन, legal maxim कोन, recent cases माने 2021 रो केसेस भी कोट करूची, राइट. सो आउ लैंडमार्क केसेस ऑब्वियसली अपन देबे. तापरे आ गोटे प्रॉब्लम देला 10 मार्क रो
ठीक है, you have to do any, okay, two questions, चारटा क्वेश्चन देथिबो ता भितरे any two you have to do, right? So तापर next question, question 12, define motive. How far motive, preparation and conduct of a party are relevant? Okay, एगुड़ा भी एटा भी, this is again related to motive. Okay, already एगुड़ा exam रे आपनकर आगुरु आसी सारछ. So एटा just खाली माने आपण कहबे बहुत गुडे जिंस रिपीट हेछ. What is plea of alibi? Okay, on whom lies the burden of proof in case of plea of alibi? Okay, एटा इंटरव्यू रे भी किछि पिला को पचराई छि ए तरह, right? So before you start any subject, just have a overall idea कि ये कौन केमती question पढ़ुछ. Point out the differences between judicial confession and extrajudicial confession. Okay, so तार characteristics कौन जेमती कि extrajudicial confession. Okay, तार characteristics कौन हैला, right? आ गोटे example दे परिबे, differences तापर से पचारुची केतेटा differences अपन दे परिबे. All this will determine what marks you have got. So this is the paper. Now let us come back to our screen. Okay, so you are having your Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Okay, BSA. Before we started, let us have a general discussion. ठीक है तो कि evidence माने कौन? What do you mean by evidence? Okay, evidence रो requirement कौन अछि? Who stage रे evidence आपनकर आसुची? Okay, अच्छा, can anyone tell me generally मते कुहंतु what is evidence? आपण जा बुझछंती, we don't require any academic definition. Okay, generally आपण कहउची evidence कौन, तले आपण कौन कहबे? What do you mean by evidence? Okay, general definition. Anyone? आपण कौन बुझुचंती evidence? जदि जदि कि आपण पचार देला evidence कौन, आपण कौन आंसर दे? Yes, anyone who can give me the answer? Ativa, you want to try? So it's proof, proof related to anything. Okay, proof related to something. Okay, ठीक है. And anyone else? Okay, Rajeshri? Sir, something that furnishes the truth. କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କି ଆମେ ଓରାଲ ହଉ, ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ହଉ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଦଉ, ତାକୁ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ କହିଥାଉ. Okay, okay. So, acha, baki bhi others also you can say. If you have anything more to add, then you can, okay, give your own answer. आपण निजरो answer भी दे परिबे. Okay, अच्छा, evidence रे हम देखिलु जहाँ भी answer कले आपण colleagues माने. Okay, so एतरे दी तीनटा dimensions प्राय हमें देखुछु कि evidence टा हमें ताकू proof हिसाब रे देखुछु. Okay, like many of you said, evidence is proof. Okay, overall ठीक अछि, हमें कह दे परिबा ठीक अछि जन जदि कहउचंदी evidence is proof. Okay, so to an extent, okay, but technically speaking, okay, हमें सेटा कहि परिबा कि evidence is proof. Okay, so evidence, testimony ଆଉ proof ए तीनटा जिंस almost same लागुची. Okay, किंतु सेमाने सेम नुह. Okay, तो आमे नॉर्मली कौन करछु ना,
एविडेंस को कि टेस्टिमनी को केबे केबे प्रूफ को हमें इंटरचेंजेबली यूज कर ओके सो एविडेंस जहाँ प्रूफ से लगी कि तारो टेस्टिमनी but that is not correct okay that is not correct as students of law and more so as judicial civil judge aspirants ଆପଣଙ୍କୁ तारो पूरा डिटेल्स टा जानिबार अछि ओके अच्छा एनीवे लेट अस बिफोर आई टेल यू दैट अच्छा जो एविडेंस हम कहूछु तारो व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ एविडेंस एटिमोलॉजी माने बुझछन तो से वर्ड टा डिराइव कोड होईची और ता माने कोन राइट सो फर्स्ट अच्छा आ गोटे जिनस है डिटेल्ड नोट्स टा मु जब भी पढ़ौची तारो डिटेल्ड नोट्स टा आपन को मिल जिवो ओके आपनकर लेक्चर वीडियो लेक्चर सेक्शन देयर यू कैन फाइंड इट मु गोटे क्लास ने भी से क्लास नोट टा सेठी रहबो बट आपन को पर्सनल नोट्स बनाया पे पड़ियो सेटा मु फर्स्ट क्लास रो कहि दूची काहे कि ना जो नोट टा मु देबी सेतरे बहुत गुडे जिंस लिखाई दियो ठीक अछि प्लस आपन को प्रिंटेड नोट्स गोटे मिलिबो कि मिलिथिबो जो माने ऑलरेडी कलेक्ट कर देथिबे से जो प्रिंटेड नोट्स जोटा दिया होची सेटा हला परीक्षा पे सेठी जहा जहा परीक्षा रे पड़े किंबा पड़ीची मात्र सेही जिंस गुडा आपनकर डिटेल रे दिया हिची अलगा जिंस जोटा बुझिबार अछि कि जोटा ओके आमे कहि परिबा कोलेटरल कांसेप्ट्स एंसिलरी कांसेप्ट्स से गुडा बेसी दिया हिनी ना पड़ेनी परीक्षा रे प्राय तेणु सी हला पक्का एग्जाम नोट्स ओके बट सेथरु कांसेप्ट बिल्ड हेई हबन राइट यू कैन नॉट बिल्ड योर कांसेप्ट फ्रॉम दैट कांसेप्ट बिल्ड करिया पे आपन को टेक्स्ट बुक पढ़िया पड़िबो ओके आउ जेहेतु एपर्यंत बीएसए रो गोटे अथॉरिटेटिव सोर्स रु आपनकर टेक्स्ट बुक आसीनी ओके इन पर्टिकुलर हला ओके किंबा आपनकर सारथी हला ओके तो एई टाइप रो बुक्स बीएसए पई आसीनी ओके कॉन्सेप्ट बेसिक किसी चेंज हेनी सेटा तो एबे क्लास रो जदी मु डिवीजन करबी आई विल टेक टू क्लासेस ओके आजिरो क्लास टा आउ नेक्स्ट क्लास टा ओके जस्ट टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस ओके बिटवीन बीएसए एंड एविडेंस एक्ट ठीक अछि काई की रिक्वायरमेंट हला एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वी विल डिस्कस टुडे एंड टुमारो तापरे हमें सेक्शन वाइज स्टार्ट करियो वी विल गो वेरी स्लो कहना एटा जो माने नुआ स्टार्ट करूचंती ओके जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन फंडामेंटली प्रथमे हमें एटा ही पढू दैट इज योर इंडियन एविडेंस एक्ट ओके और एबे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और जनरली स्पीकिंग द एविडेंस लॉज because without knowing the evidence laws neither you can start with procedural law nor criminal laws हैला तेणु जनरली एटा भलरे पढिया पे पडिबो आपण ओके so every class I'll be going in details okay सब सेक्शन रो गोटे क्लास रे हमें 5टा रु 6टा 7टा सेक्शन सारी परिया 5टा आइडियली काहे कि ना तो से सेक्शन टा सार देले अपन ता रिलेटेड पुनी कोन क्वेश्चंस अछि एमसीक्यूज गरिका दैट आल्सो वी विल सॉल्व ओके एंड कोन ता देरे मेजर क्वेश्चंस आसी पारे मेंस रे कोन आसी छी सेटा भी एका संगे रे से क्लास रे हमें देखि दब ओके राइट आई वाज टॉकिंग अबाउट योर evidence okay so it has been derived from the Latin word evidere right you can just write it down okay so how to derive it has been derived from the Latin word evidere okay evidere ru eta derive hechi right to माने कोन okay so to discover okay or to prove right
ओके अच्छा ने गोटे इंपोर्टेंट जिनस जेहेतु आम स्टार्टिंग करूछु आपण को बुक फॉलो करिवे एबे आपनको भितरु दीटा कैटेगरी रो स्टूडेंट्स अछंती ओके जो माने फर्स्ट एबे इनिशियल प्रिपरेशन स्टार्ट करूछंती यू गो विथ ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ओके सबुठु अक्लेम टेक्स्ट बुक एविडेंस रो सेटा हैला पर्टिकुलर करो ओके दैट यू कैन फॉलो अदर वेरी गुड बुक्स आर आल्सो देयर ठीक अछि रतन लाल धीरज लाल गला सेगुड़ा सब यू नो बट पर्टिकुलर आपनको सेटा भल लागिवो पॉइंट्स रे भी देछि जहा जहा इंपोर्टेंट पार्ट सब कवर करछि ओवरऑल गोटे भल रे सेटा देछि ओके एविडेंस एक्ट पे बट बीएसए रे कोन चेंजेस होछि सेटा हमें तापर हमें ताको देखिबा ओके एटा हला कोन टेक्स्ट बुक ता माने एथरे आपणकर सब कॉन्सेप्ट सेटा सब देछि जदि आपण एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दरकार गोटे तो इंस्टीट्यूट तरफ रु प्रिंटेड आपको मिल जाउछि आ गोटे हला आपणकर झाव वाला ओके झाव वाला इज आल्सो गुड इनफैक्ट द एंटायर झाव वाला सीरीज टा भी आपण ताको यूज करि परिबे काहे ना से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट वाइज तार ओके ट्रीटमेंट करछि सब्जेक्ट दैट इज आल्सो मेनी अदर गुड बुक्स आर देयर ठीक अछि आपण इधर जदी निजर किछि गोटे फेवरेट बुक अछि जोटा आपण आपन लॉ स्कूल बेले पढिथिले सेटा को स्टिक करिवे ओके जदि आपको सेमिति बिकॉज यू सी इन मेनी कॉलेजेस व्हाट हैपेंस इज दिस प्रोसीजरल लॉज आर नॉट टॉट वेल ठीक है प्रॉपर सेटा पढ़ा हुएनी तेणु टेक्स्ट बुक की कौन से गोटे से रेकमेंड भी किछि करंतनी ओके जहा पिला निजे पढ़ला सेमिति जदि केस हिच आपन संगे ताले यू गो टू पर्टिकुलर प्लस एगुड़ा सब कौन एते अपडेटेड हे नथिबो ठीक अछि 10 वर्ष 15 वर्ष इवन ताठू आगर केसेस देथिबो जो नोट्स टा मु दोछि दैट इज अपडेटेड टिल योर क्लास ओके माने यदि 25 दिन आगु गोटे केस किछि सुप्रीम कोर्ट रे हिची ओके दैट आल्सो साइटेशन एंड डिटेल्स यू विल फाइंड इन माय नोट्स ठीक अछि तो सेटा आपनको से मु अलगा फोल्डर एथि पई करनी ना आपनको पुनी डिफिकल्टी हबो लास्ट बैच रे आपण देखिबे से फोल्डर रे ही सब जिंस दिया हिची ओके तो एई बैच रो भी आपनकर जो लेक्चर वीडियोस फोल्डर रे से तरे ही क्लास 1 ओके क्लास 1 रो पीडीएफ लेक्चर टा ओके तो सेटा सेव थ्रू पुनी आपनको नोट्स बना पड़े यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट टाइम ठीक अछि आ जो मानकर सेमती इन्वेस्ट करिया पई टाइम नाही ताहले जो प्रिंटेड मटेरियल दिया होची ताको धरि की पढो हैला किछि आपनो प्रॉब्लम होबो बुझि पारले सो लैटिन टर्म रो एटा आछि दैट इज एविडेरा व्हिच मींस टू प्रूव और डिस्कवर ओके सो देन वी हैव द डेफिनेशंस बहुत प्रकार डेफिनेशन अच्छी बहुत जन आपणकर देइचंती जो माने एकेडमिक्स माने डेफिनेशन ओके फ्रॉम द पॉइंट व्हाट इज एविडेंस सेटा जनरली पढ़िबार संभावना नाही ओके बट स्टिल देन लाइक मेनी ऑफ यू सेड ओके व्हाट इज एविडेंस सो प्रूफ के जन कहले आपन को भीतर राइट तो प्रथम मु सेई जिंसटा टिके क्लियर करे ए जो तीनटा टर्म हमें देखु okay that is evidence testimony or proof okay what is the difference between them evidence testimony and proof are they the same certainly not they are not the same they are related pakhapakhi nijaro but evidence testimonial and proof ठीक अछि तो गोटे बेसिक डिफरेंस हमें देखिबा एथरे कि एविडेंस कोन टेस्टिमोनी कोन और प्रूफ कोन ओके राइट तो फर्स्ट लेट अस कम टू एविडेंस एविडेंस तो आपण बुझिले एबे एविडेरा रु आछि ओके एनीथिंग व्हिच makes something more clear okay which makes something more clear or it makes it evident ठीक अछि मते को आउची कि मु अमुक जगह ए जगह रे ओके मु थिली जेतले मर्डर हैला से टाइम रे ए जगह रे मु थिली ठीक अछि को जाउची बट मु कहूची मु सेठी नथिली मु अलगा गोटे जगह रे 500 किलोमीटर दूर रे अलगा गोटे जगह रे थिली okay and I have to prove that prove my alibi
तो सेठी मु जोटी थिली सेठी पाखा पाखी तापर सीसीटीवी रु जणा पड़छि कि हां मु डिफरेंट जगह रे ओके सेही टाइम रे 500 किलोमीटर दूर रे अछि राइट so that CCTV footage makes it quite evident that I was not present okay at the crime scene re mu present nothing right anything which okay makes something evident is called evidence ठीक अछि टेस्टिमनी कोन ओके टेस्टिमनी बेसिकली आपनकर डिराइव होची कोठू the term testis okay which means witness so testimony माने कोन कि witness कोन कहला that is the statement of the witness okay evidence ता हला कोन खाली गोटे गोटे पद रे किबा फ्रेज रे लिखंतु ठीक अछि जो पर्सनल नोट्स भी आपण बनेबे अच्छा आपण नोट्स बनंदी कहीं बहुत जण ना सेटा भी से माने जानि नथांती ठीक आमे नोट्स काई बनउ बहिर रेप्लिकेशन करिया पे बहिर लिखाई जी एते सुंदर सुंदर अक्षर रे आमे भी ताकू नोट रे लिखिबो ओके नोट मेकिंग रो जो आर्ट टा सेटा रिक्वायरमेंट तार ए थाए कि मते क्विक रिवीजन जते बेले करिया पे पड़िबो कना थरे मु गोटे स्टैट्यूट पढी देली गोटे कांसेप्ट पढी देली तापरे तो एमती नो कि एटा सरी गला ना मते एग्जाम पई ताकू सब बेले रिफ्रेश करिया पड़िबो रिफ्रेश केमती करबी बहिरे जदि अंडरलाइन करूची कि हाइलाइट करूची पुणी एते मोटा बहिटा खोली कि ताकू सब रिवाइज करी हबो राइट सो सेहिथि पई हमें पर्सनल नोट्स टा बनाउ तेनु पर्सनल नोट्स रे फुल सेंटेंस केबे लेखा हुएनी ता ना हला पर्सनल नोट्स ठीक अछि सो सेथरे फ्रेज लेखा हो जोडा आपण बुझी परियो केते पिला तो न्यूमोनिक्स रे भी लेखंदी न्यूमोनिक्स माने कोन शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिविएशंस व्हिच दे कैन अंडरस्टैंड ओके आपण तो बहिटा माने आपण रैंक पाई गला परे सेटा को छापीबे बोली तो लिखु नांदी ना ओके सो नोट्स बनेबारे भी आउ पढ़िबारे भी देयर हैज टू बी इकोनॉमी ऑफ टाइम और नोट्स जदि बहुत एक्सपेंसिव थिबो माने बहुत अधिका लेखा हिथिबो ताले सेटा प्रॉपर नोट्स हमें कहि परिबा ठीक है तो अधिका टाइम नोट्स रे पढ़िया पे मते हैला हमको धरंतु 30 टा रु 40 टा क्लास लागिवो सारिया पे भलो रे भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके अच्छा एबे 40 क्लासेस रो जदि मु ताको एबे देखिबी नोट्स मु आपन को देबी ईच क्लास रो एटलीस्ट तो 10 पेज तो 400 पेज ही गला आपन को पर्सनल नोट शुड नॉट एक्सीड 30-40 पेजेस ता भितरु जहा बहुत इंपोर्टेंट अछि पॉइंट्स रे आपन को लिखिबार अछि ओके जोडा आपन बुझी परिबे राइट सो वी आर क्लियर व्हाट इज एविडेंस एनीथिंग व्हिच मेक्स समथिंग एविडेंट ताको आपन एविडेंस कहउचंदी टेस्टिमनी कोन ना विटनेस रो जो स्टेटमेंट ताको ओके आपण टेस्टिमनी कहउचंदी ओके तापरे जो टर्म टा आपण यूज कर ओके प्रूफ व्हाट इज प्रूफ ओके प्रूफ टा कोन होची ना इट इज द इफेक्ट ऑफ एविडेंस प्रूफ इज द इफेक्ट ऑफ एविडेंस आपण प्रथमे एविडेंस देले एविडेंस रे कोन हला एविडेंस होची which is making something evident okay CCTV footage made it evident that I was not present okay at the murder scene बुझी पारले तेनु सेही केस रे एबे प्रूफ कोन हला that is the aftermath or you can say okay effect of evidence it may be positive effect it may be negative effect एही केस रे कोन हला was okay Mr X की was I present there okay so obviously eta negative re gala ठीक अछि so the proof okay based on the evidence is negative in this case that no he was not present at the crime scene से 500 किलोमीटर दूर रे कोडी थिला बुझी परले एटा रे लिखि दियंतु गोटे गोटे वर्ड रे लिखिबार सेंटेंस किछि लिखिया दरकार नै नले बहुत टाइम भी लागि जिवो आपण कांसेप्ट बुझिबे ओके आउ पॉइंट्स रे लिखिबे बाकी नोट्स रे आपण को डिटेल्स मिल जिवो इफ यू वांट टू राइट इट सेठू देखि कि आपण लिखि परिबे ओके सेडा आपणकर सेही जो फोल्डर रे वीडियो अपलोड जतेले हबो ओके 24 आवर्स परे तो वीडियो सहित से नोट्स उडा थिबो एंड नोट्स आल्सो विल बी नंबर्ड इन द सेम वे ठीक अछि क्लास 1
बीएसए क्लास 1 तो नोट्स रे भी लिखाई थी बीएसए क्लास 1 सही क्लास रो एटा हला नोट्स ठीक अछि आउ ताकू यूज केमति करिवार अछि ताकू यूज करिवे निजरो पर्सनल नोट्स बनाए पे ओके तो लेखंतु से हिसाब रे एविडेंस हला which makes something evident number 1 testimony hela okay that is the statement of the witness okay our proof hela effect of evidence okay which may be either positive or negative जदि गोटे जिंस yes रे आसिला सेटा positive मु थिली कि नाही सेठी no रे आसिला सेटा negative so proof is the effect of evidence hela proof is the effect of evidence आमे ए तीनटा नॉर्मली स्पेशली एविडेंस और प्रूफ को हमें इंटरचेंजेबली यूज करू ओके बट दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट ओके तो दिस इज द एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ एतिकी जिंस आपण को प्रॉपर्ली बुझिबार अछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एविडेंस टेस्टिमनी एंड प्रूफ ठीक अछि ओके सो अच्छा एतिकी भितरे if you have any doubts then you can ask me else we will go to the next parts okay ame eporjanto evidence ro definition ku jai we have not got to the definition of evidence सबले मन रखिबे जे एग्जाम रे किछ गोटे पढुची ओके आपण आंसर सेठी केमति देबे ठीक अछि आपण फॉर एग्जांपल एविडेंस ऊपर कोन एविडेंस जदि मते एविडेंस को डिफाइन करिवार अछि केमति डिफाइन करी ओके गोटे जूरिस्ट कोन कहिचंती से हिसाब रे डिफाइन करिवि ना जनरल किंबा जेनेरिक डेफिनेशन ताकू कोनती वर्किंग डेफिनेशन ता देबी ओके so we always go for working definition okay so are कोन working definition what do you mean by the what is the working definition okay of evidence right so generally आपण को ए तीनटा जिंस जाना पड़ला what is evidence what is testimony and then what is your proof now generally speaking if I tell you you define what is evidence ठीक है so then you can say that it refers to any material okay it may be any statement any object okay which is generally legally submitted to a court or a tribunal to establish the truth of a fact in a legal proceeding एटा गोटे जनरल डेफिनेशन आपण दे परिबे एटा कोनोसी ओके नो वन हैज इट इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू एनी पर्टिकुलर जूरिस्ट यदि जूरिस्ट को हिसाब रे लिखिबे देन गो थ्रू द नोट्स एंड यू कैन राइट डाउन हमरो उद्देश्य रे जो टाइप रो क्वेश्चन पढुची प्राय व्हाट इज द एविडेंस व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस ए टाइप रो क्वेश्चंस आसीबार संभावना कम बट आपण को जानिबार अछि ओके सो just take down working definition of evidence okay these three are clear what is the difference between evidence which makes anything evident or clear what is testimonial ame dekhilu testimonial is basically okay witness jaha kohuchi statement okay of witness and proof is the aftermath of the effect of evidence hela eta ठीक रे जानिबे otherwise जेतबेले हमें पचारि what is evidence okay तो एमती होबा कथा न कि सेटा हला proof ठीक अछि हमें इंटरचेंजेबली यूज करछु but that is not the case okay proof is the effect of evidence ठीक है proof is the effect of evidence right now next part को आसंतु the working definition general definition of evidence academic definition को मु जाउनी सेटा if you are interested you go through the notes which I will give okay so working definition कौन था okay what we had just discussed
You can write that part. That is, it refers to any material, statement or object. Okay. Any material. तो सेतळे आमे तले बीएसए को जिबा त तारो ओके एविडेंस माने कोन डेफिनेशन कोन अकॉर्डिंग टू बीएसए सेटा आमे देखिबा. ओके. सो डेफिनेशन रे कोन कहूची ना इट मे बी एनी मटेरियल, ओके, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ए तीनटा भितर से जा भी परिबो, दैट इज एनी मटेरियल, एनी स्टेटमेंट और एनी ऑब्जेक्ट. ओके. देन व्हाट हैपेंस बेसिकली, इट इज एविडेंस के तळे आपण कहउछन जेतबेले सेटा नॉर्मली, ओके, स्पीकिंग इन ए जनरल सेंस, लीगली सबमिटेड टू ए कोर्ट, ओके, और ट्रिब्यूनल. Second part of the definition, legally submitted to a court or tribunal. Okay. तापरे नेक्स्ट आमे कोन कहि परिबा, कोन तार मेन ऑब्जेक्टिव कोन, काहे कि कोर्ट के ट्रिब्यूनल रे अपन ताकू प्रेजेंट करूचंदी टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ. ओके. टू एस्टैब्लिश a truth. Okay. What is the necessity of establishing that truth? Okay. जोड़ा कि basically it is going to prove a fact. Okay. To establish a truth of a fact in legal proceedings. बुझिपारे एटा हमको लिखिबार अछि, नॉट दैट कि ऑस्टिन या कहिथिले. ओके. सेटा केतेबेले ना सेतले जूरिस्प्रूडेंस जदि नउचंदी सेही टाइप रो क्वेश्चंस रे से एकेडमिक डेफिनेशन दिया हुए. बट जदि गोटे एप्लीकेटिव क्वेश्चन रे, गोटे जनरल क्वेश्चन रे आपण को पचार देला व्हाट इज एविडेंस, आपण एकेडमिक डेफिनेशन दे परिबे. बट एटा प्रथमे दबार अछि. दीज आर कॉल्ड वर्किंग डेफिनेशंस. ओके. वर्किंग डेफिनेशंस माने एगुडा हला जोडा कि गोटे कॉमन डेफिनेशन आपण कहि परिबे. काना डिफरेंट जे आपणकर जूरिस्ट थिबे से माने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रु निज डेफिनेशंस देथिबे. ठीक अछि. सो by evidence we mean any material or statement or object which is legally submitted to a court or tribunal to establish a truth of a fact in legal proceedings. ठीक है. तो एटा हमको एई गोटिए लाइन लिखिबार अछि बेसिकली. हला इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपोर्टेंट. केति की वर्ड भितरे गोटे कांसेप्टटा लिखिबी आगु को जो माने ओडिशा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस घरिका पई प्रिपेयर करिया पई चाहउछंती. ओके. एडीजे पई सेठी देखंतु क्वेश्चंस केमती आउछि 5 मार्क रो 2 मार्क रो कि ओजेएस रे 25 मार्क क्वेश्चन सेमते आसे, किंतु क्वेश्चन प्रॉपर थिबो. ओके. डायरेक्ट भी थाई पारे आ आपनकर एनालिटिकल केबे केबे भी थाई पारे, बट बहुत कम टाइम रे लिखिया पे पड़े, बहुत कम वर्ड्स रे लिखिया पे पड़े. तो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. से जो स्किलटा आपण प्रथम रु ही इम्बाइब करंतु कि मते केते गुडे सबु जिंस लिखिबार अछि, किंतु विथ ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कम वर्ड्स लिखिबार अछि. हैला एमति नै कि गोटे एसे ही लिखि देबे. राइट. तो सेटा आपण देखिबे आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट फोल्डर अछि. ओके. से फोल्डर को देखि कि स्टार्ट करन. से फोल्डरटा कोन ना प्रीवियस जो सब टॉपर्स माने रहिचंती हमरो तांकर जो सब खाता उडा अछि, टेस्ट सीरीज रो जो खाता हरिका देथिले से लेखिचंती केमते आंसरटा आउ ताको आपण मिसेबे आ संगरे कर मॉडल आंसर से. आई टोल्ड यू नो वन कैन राइट लाइक ए मॉडल आंसर, बट सेही पार्ट्स उडा हिची कि नै. जदि गोटे पिलर देखिबे आपण भाबुथिबे रे
तो मॉडल आंसर एमती स्ट्रक्चर बट जे रैंक रखिछन ताको स्ट्रक्चर टा पूरा सेम तो होनी किछि सेम होची माने कोन जदि आपण 30-40% भी मॉडल आंसर वाला लिखुचंदी यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स ओके सो एनीवे definition overall definition I am not going to academic definitions overall definition समस्तंगर क्लियर हैला ए पर्यंत एवरीवन इज क्लियर ना कहार कोन जदि किछि डाउट्स अछि ताले मते पचरन till here if you have any doubts you can ask अच्छा जदि आपण एतिकी बुझिले ताले मते गोटे कथा कहंतु now if I ask you tell me what are the characteristics or essential elements okay characteristics of evidence what will be your answer कौन आपण कहबे anyone Shreya Sir, it can be any material, statement, or an object. हाँ of course I mean सेटा तो हमें definition रो you can pick up okay anyone else Sonali can you add something anyone else Ativa So it shall be complete, okay sufficient. it should sufficient complete it should not be broken or let's say it should not be incomplete okay it should not be ambiguous a type of question okay fine to some extent that is correct but still then हमें It should be the relevant. It should अच्छा be relevant. relevance हाँ सेटा गोटे important जिंस relevance टा जोटा कि हमें आगु को जाई कि पढ़िबा evidence तो बहुत गुडे जिंस evidence हे पारे किंतु ओके कोर्ट रे कोटा एडमिसिबल हबो कोर्ट कोटा अलाउ करिवे सेटा डिपेंड करूची से पर्टिकुलर एविडेंस जोटा आपण आनी चंदी सेटा से केस ओके को केते रेलेवेंट होची धरंतु केस टा हला कि ए आउ ए अक्यूज्ड हेची बी रो मर्डर करिवे ठीक अछि आपण एविडेंस आनी कि दउचंदी कि ए टॉपर थिला तार स्कूल रे ठीक अछि तो डायरेक्टली तो नुह ओके आगु को हमें कैरेक्टर एविडेंस करके पढ़िबा सेते बेले जस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग्स राइट किसी क्लास रे टॉपर थिला ओके हाउ इट इज गोइंग टू प्रूव और डिसप्रूव दैट से मर्डर टा करथिबो कि कर नथिबो बुझि पारले तो जहां भी आपण एविडेंस देबे ओके सेटा कोर्ट को लागिवा दरकार कि ए केस संगे रे रिलेटेड अछि ओके जो पॉइंट ऑफ एडजुडिकेशन अछि ओके जोटा कि सेंट्रल फैक्ट थिबो किबा सेंट्रल इश्यू अछि ओके जहां को कोर्ट एडजुडिकेट कर दुचंदी सेही सेंट्रल इश्यू संगे रिलेटेड थिबा कथा सेटा राइट so that also will be one of the features okay आउ कोन कहि परिबे so take down ingredients or you can say characteristics of evidence Sir, okay based evidence, sir, based evidence कहि परिया कि evidence सबବେଳେ जदि दिया हबो ताले based evidence rule को follow करी कि primary evidence always हाँ preferable. एटा भी हमरो एग्जाम रे 2-3 थरा पढ़ी सारची बेस्ट एविडेंस रूल जोटा ठीक अछि तो बेस्ट एविडेंस रो कांसेप्ट को हमें टिके आउ टिके यू नो परे जिबा व्हाट इज बेस्ट एविडेंस ठीक अछि so that is and the generally courts will always prefer best evidence under the best evidence rule okay मु एठी general characteristics of evidence विषय रे पचोच Sir, right same characteristics रे हमें सेटा ऐड करि परिबा कि my question is that हाँ why not आपण ऐड करि परिबे ओके बट सेटा एक्चुअली एविडेंस रो कैरेक्टरिस्टिक ता नुह कि सेटा एविडेंस मे नॉट बी बेस्ट ठीक अछि माने एविडेंस रो रेलेवेंसी आपण कहले दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ओके तो रेलेवेंस हला गोटे दैट इज वन ऑफ द सेंट्रल characteristics of evidence has to be relevant.
ठीक अछि तापरे आउ गोटे कांसेप्ट हमें पढिबा जोटा जो टर्म टा मैं जस्ट कहली दैट इज एडमिसिबिलिटी ठीक अछि जे रेलेवेंट आपण गोटे एविडेंस दउचंती तापरे कोर्ट को लागिया कथा कि सेटा एडमिसिबल ओके हेई पारिबो दैट मीन्स द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट और एडमिट्स इट ताको हमें एडमिसिबिलिटी कहू ओके फॉर एग्जांपल लेट्स से आम लॉ रे तो अछि आपण जेमिति भी एविडेंस कलेक्ट करंतु इंडियन लॉ रे से एविडेंस जदी जाटो अणा हिची से जानि निबी देन आल्सो फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस ओके for the overall good of justice that is acceptable that is not the case in US for example US रे गोटे let's say गोटे आपनकर लैपटॉप पे सेतर बहुत इंफॉर्मेशन अछि से लैपटॉप टा जनक गोटे क्रिमिनल रो गाड़ी रे अछि ठीक अछि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाई की गाड़ी भांगी की ताको नै आउछन वारंट मिलुनी यू नो तंकर सर्च और सीजर वारंट आपन को मिलुनी ओके यूएस रे आउ इंडिया रे धरंतु न मिलला पर भी से बहुत इंपोर्टेंट तेणु से कौन कर गाड़ी भांगी की नहीं आसुन राइट और दे गेट द इंफॉर्मेशन इन एनी अदर वे अपार्ट फ्रॉम द लीगल वे प्रेस्क्राइब इलीगली आपण कहि पारि और ताकू कोर्ट रे बे प्रेजेंट करी होबो कि नहीं इंडियन कोर्ट रे प्रेजेंट करी होबो आ एडमिट भी हे जिवो ओके इफ इट इज फॉर द जनरल गुड केमिति आछी एविडेंस ता हमरो सेटा हमें एते देखुन ताकू बट यूएस रे that is inadmissible in court ताको कोर्ट से एविडेंस मानिबन ओके बिकॉज इट हैज बीन acquired illegally except for federal crimes माने जो टेररिज्म ये से ता छडा ओके आउ किछटा एक्सेप्शंस अछि बट एनीवे माने मोटा मोटी भाबरे एति कथा कि अमेरिका रे ताको एविडेंस मानिबे नाही कोर्ट हमरो एठी से सब व्यवस्था नाही ओके तो लेखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिस्कस रेलेवेंस तो गोटे हला ओके ओके तो मु कहूची गोटे गोटे आपण लिखि चलम तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस सो फर्स्ट हमें कोन देखलु relevance that is most important that particular evidence has to be relevant directly related to the facts in dispute okay evidence has to be directly related to the facts in dispute so number 1 first point है relevance okay तापरे आसिला admissibility the legal standard को meet करूछु कि नहीं okay so for example हमर जंती एठी पुलिस को जहाँ भी आपण कन्फेस करथिबे पुलिस सामने रे तो सेटा कोर्ट रे मान्य নহয় ओके एनी कन्फेशन व्हिच इज गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर सेटा एडमिसिबल एविडेंस नुह ओके कोर्ट रे ठीक अछि सेमती जदी आपण प्रूफ करि परिबे कि मते कन्फेशन मोटू नै चंती ओके अंडर ड्यूरेस मते मो ऊपर प्रेशर पकै कि मते बाडै कि मते कोर्स करी कि ओके ताले सेड़ा इंडियन लॉ अंडर रे इनएडमिसिबल ओके एक्सेप्शंस अछि फॉर एग्जांपल आपण टेररिस्ट की चोर को आनिबे और ताको तो बापारे धन रे कहि कि पचारि होबन ना आउ से जो इंफॉर्मेशन जदी दबारे डेरी कर दबो ताले बहुत लोकंगर सेठी ओके लाइफ रो रिस्क आसी जाय तो सेठी आउ यू नो ओवरऑल गुड ऑफ द सोसाइटी की आपण देखुचंती राइट सो ऑल्दो सेम जिंस ओके आपणकर से जदि से क्लेम करछि कि मते कोर्स करी कि मते बाडे की कन्फेशन नै चंती ओके ताले जनरली इट इज इनएडमिसिबल अंडर इंडियन लॉ ताले से जो तारो जो कन्फेशंस करिका जो बाहर करछि ओके पुलिस तेरा कोन पय यूज हुए दैट इज यूज्ड टू ओके कोरोबोरेट अदर फैक्ट्स आउ गोटे चेन ऑफ इवेंट्स को से माने बनांती से चेन टा जदि बहुत स्ट्रांग अछि ताले कन्विक्शन प्राय हे जाय ओके सेटा को से प्रूफ हिसाब रे कि सेटा को से एविडेंस हिसाब रे देबेनी कोर्ट रे बट से कहइबो कि हां मो संगे रे ये थिला से थिला हमें सेउठू आनिथिलु ओके बम आनिथिलु ये आनिथिलु से तो जहा भी आनिथिलु तो सेगुडा ओके कोरबोरेट हे जिवो एई बस रु आसीथिले
फिर सीसीटीवी कोड से रोड रे थिबो एक सेगुडा सब तापरे दे विल कलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम दैट बुझी पाले तो नंबर 1 रेलेवेंस नंबर 2 एडमिसिबिलिटी ठीक अछि थर्ड हैला जो भी एविडेंस अपन दउचंदी दैट एविडेंस हैज टू बी रिलायबल नॉले इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट ओके रिसोर्सेस नष्ट होबो समय नष्ट होबो पैसा नष्ट होबो सब नष्ट होबो राइट so number 3 हैला reliability okay that evidence has to be reliable okay evidence has to be reliable okay reliability हिसाब रे आपनकर बहुत टाइप रो एविडेंस अछि जोडा कि हमें नॉर्मली ओके एडमिट करूनु जेमति कि हियर से आगु को हम पढिबा हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस ओके हियर से माने कोन सुना सुना जेटा हम सुनि जन मु कॉफी पिउथिली कैफेटेरिया रे तो मु पछरे जो लोक माने बसी कथा होतले कि मिस्टर एक्स ओके मिस्टर वाई की मार देछन राइट ना एक्स की वाई की मु जाननी ना मु सेठी थिली ना मो सेंसेस रे मु किछि परसीव करिछि ओके आगु को हमें देखिबा डेफिनेशंस करी करे ओके परसीव्ड बाय द सेंसेस माने कोन ना मु आखिरु देखिछि ना मु कानरु सुनिछि एग्जैक्ट जिंसटा ओके कि कियोडे गुळीटे मारला सेटा मु सुनिछि दौड़ी गला लको कोडे हेछि ओके से कथा भी नो ना मु किछि स्मेल करिछि ना किछि फील करिछि स्किन रे ओके माने एनी परसेप्शन मते हेनि ता गोटे का हेछि कोन सी कोन कहूछि ताकू मु सुनुछि हैला तो हियर से एविडेंस राइट तेणु ऑब्वियसली से रिलायबल नुह सेटा हियर से एविडेंस ठीक अछि बट देयर आर एक्सेप्शंस जोडा हमें पढिबा बहुत थरा सेटा आपनकर क्वेश्चन रे पढिछि ओके टाइम डिक्लेरेशन हे गला ठीक अछि तापरे आपनकर देयर आर यू नो मेनी अदर एक्सेप्शंस आल्सो ओके ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ठीक अछि ताकू भी कोर्ट कंसीडर करंती राइट तो सपोज गोटे लोकड़े गोटे ओपन फील्ड रे ठिया आइछ ताकू गुली बाजी गला राइट गुली रो एंगल को देखिकी गोटे बैलिस्टिक एक्सपर्ट को डकायला से एंगल डिटरमाइन करी कहले कि ए नॉर्थ ईस्ट साइड रो एतिकी एंगल रे गुलटा आसिला ता माने एटा बिल्डिंग नंबर ए जोटा सेठी थिला तारो 7th फ्लोर रो आसीथिबो से को देखथिले कि सुनिथिले ना ताकर से एक्सपर्ट विटनेस देले से सेठी ताकर ओपिनियन टा देले ओके तापर कोर्ट को पाखरे डिस्क्रिप्शन अछि से ओपिनियन माने कथा मानिबे जदि न माने कथा न माने राइट तो सेटा भी गोटे एक्सेप्शंस व्हिच वी विल सी competency number 4 okay that whatever you are presenting as evidence that should be competent enough legally competent माने कोन legally competent हबा कथा ठीक अछि सो जेमति कि आपण जदि गोटे माइनर को आनिबे राइट तो ताकू कोर्ट केतेटा बेसिक क्वेश्चन पचारिबो जदि बुझी पाउछि से क्वेश्चन ओडा से कोन कहूछि से बुझी पाउछि ताले से कॉम्पिटेंट विटनेस हे परे our general rule टा हैला everyone is a competent witness ठीक अछि तो किए competent witness नो जे से कथाटा बुझी परिबनी आ प्रॉपर आंसर सेमति दे परिबो ओके बहुत गुडे केसेस रे बहुत जन भाबती माइनर कर विटनेस एज विटनेस दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ एबे रिसेंटली गोटे केस रे ताको लोअर कोर्ट एक्विट कर देथिला गोटे गोटे फैमिली रे द फादर किल्ड द मदर ओके माने हस्बैंड वाइफ की मार देले आउ सेठी विटनेस थिला तांकर पिलाडा ओके 9 ना 10 इयर्स रो तो सी तार विटनेस देला ठीक अछि लोअर कोर्ट कहले कि नहीं ए छोटो पिला 10 इयर्स रो तो तार विटनेस टा ओके ते रिलायबल होबनी कॉम्पिटेंट नो बट ताको आगु को हाई कोर्ट एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देले कि से पिला को एतले बेसिक क्वेश्चंस पचराउची सिचुएशन रो काई के देला से सब बुझी भी पाउची और से सब ठीक रे आंसर भी दे पाउची ओके तेनु तार कॉम्पिटेंट टेस्ट सुडा अछि ओके जो वेदर ए witness is competent or not there are certain tests for that we will see so fourth है competence okay ये witness दउची से source of evidence it may be a witness it may be any document सेटा legally competent अछि कि आपण गोटे डॉक्यूमेंट आनछंती से डॉक्यूमेंट कि जणा ही पड़नी सेटा फॉर्ज कि सेटा गोटे
सर्टिफाइड कॉपी कौन जदि सर्टिफाइड कॉपी अछि ताले ठीक अछि ओरिजिनल टा आपको मिल जाउची इट इज फाइन बट जदि सेमती नुह कि एटा फॉर्ज होवर चांसेस अछि ताले इट इज नॉट दैट पर्टिकुलर एविडेंस इज नॉट कॉम्पिटेंट तो नंबर 4 लिखंतु कॉम्पिटेंसी ओके तापरे नेक्स्ट फिफ्थ नंबर हैला मटेरियलिटी कौन मटेरियल एविडेंस जोड़ा हमें कहूँ से जो एविडेंस आपण आनी चंती सेटा डायरेक्टली कनेक्टेड हेतिबा दरकार केस को ओके आउ तार जो फाइनल रिजल्ट को सेटा किछि गोटे इन्फ्लुएंस करिया कथा कि सेही एविडेंस जोगु आपण जण को एक्विट कर देले कि जण को कन्विक्ट कर देले ओके सो नंबर 5 मटेरियलिटी ओके नंबर 5 मटेरियलिटी राइट that it should be directly connected to the case and it should influence the outcome of the case okay tapare kono na so these are some of the tapare types re segura ta ame dekhiba okay next hela so what generally what can be the nature of evidence okay nature of evidence under re so next point apana sixth point lekhantu presumptive or conclusive in nature it may be either presumptive or it may be conclusive kichita evidence gote presumption raise koruchi conclusion okay seta douni whereas some other evidence are conclusive in nature jo example ame nelu मोर सीसीटीवी फुटेज अछि जो टाइम रे मर्डर हला मु 500 किलोमीटर दूर रे थिली मल्टीपल सीसीटीवी एटीएम रो होटल रो सबुतरे मु कैप्चर ही जाइछि ओके तो सेठी मते प्रूफ टा कंक्लूसिव नेचर रो आसी गला राइट तापरे धरंतु गोटे मर्डर हेछि कोठी ठीक अछि मर्डर वेपन मिलला गोटे नाइफ रे ब्लड लागि ओके आ नाइफ टा मोर ताले सेठी कोन प्रिजम्पशन हला कि ये मर्डर सीन पाखरे थिले क्राइम सीन पाखरे ओके मर्डर वेपन तांकरी और सेथरे ब्लड लागि तो सेठी प्रिजम्पशन हला कि ये बोले मारी चंदी जे लोकर डेथ हेछि ये मारी चंदी ताको तारी ब्लड लागि एटा प्रिजम्पशन ओके कंक्लूसिव तो नो ना तापरे गला सेटा डीएनए यू नो तर जो एनालिसिस पई जळा पडला सेटा ह्यूमन ब्लड ही नो कौन है ना से मु चिकेन काटी ओके फॉर एग्जांपल बुझी परछन तो योर एविडेंस मे बी प्रिजम्पटिव और कंक्लूसिव इन नेचर ठीक है आउ नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम इंडियन लॉ ओके दैट इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस सो लास्ट पॉइंट लिखंतु मस्ट बी लीगली ऑब्टेन्ड विद इन ब्रैकेट in India. Okay, must be legally obtained. Na mane in the sense kono general rule of evidence hela evidence ta ko legally obtain haba darkar. Jodi eita bhango hochi apana illegally obtain करचंती evidence ta ko okay Indian law re mu first ru कहितल सेटा हमरो distinction court एते करेनी सेटा जेंति कि से भांगी की कार रू लैपटॉप नहीं आसिले ठीक अछि Indian courts will admit that evidence जदि सेटा overall public good पई सेटा दरकार अछि for the furtherance of justice if it is required in your US that is simply not possible okay तर बहुत examples अछि for example illegally जदि phone tapping कराइछ okay illegal phone tapping जदि हेछि ताले सेटा कोर्ट रे एविडेंस हिसाब रे आपण दे पारिबे कि नहीं ओके अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट नो बट जनरली जदि गोटे बहुत मैटर ऑफ इंपोर्टेंस अछि आ सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रूफ बळे आछी ताले कोर्ट टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस कोन ड्यू प्रिकॉशंस तार फोरेंसिक एनालिसिस हो कि सतरे से जे कहूची सुनो किछि डिजिटली ताको चेंज करनांदी तो टेम्पर करनांदी तो okay then court can accept it but in US it is simply it will not be possible okay तेनु से एविडेंस उडा कोन पई आपनकर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यूज करंती टू एस्टैब्लिश देयर केस फर्मली से थ्रू आउ केते गुडे डॉक्यूमेंट्स की कोन एविडेंस मिल जिवो से गुडे कोर्ट रे से प्रेजेंट करिवे ओके
तो legally obtained, it must be legally obtained. सेठी लिखंतु however exceptions exist in India. ठीक अछि, illegally obtained evidence भी आपणकर कोर्ट रे एडमिसिबल हेई परिबो. गोटे टेरोरिस्ट जो एग्जांपल मु देली कि से गाड़ी रे तार लैपटॉप अछि, लैपटॉप पुलिस भांगी कि नैछि हैला, लैपटॉप पुलिस भांगी कि नैछि सेटा एनालाइज कला बेलकु 2 दिन परे ब्लास्ट होबार अछि एंड दे वर एबल टू स्टॉप द ब्लास्ट. ठीक अछि, धरा पड़ला तापर टेरोरिस्ट कोर्ट को एतले केस गला टेरोरिस्ट पे जे लड़ुले एडवोकेट से गले एडा ओके जो एविडेंस ये दउचंदी सेटा एडमिसिबल होबा कथा नुह जेतु ये हमर विदाउट एनी वारंट ओके ये भांगी दैचंदी हम गाड़ी की सेटु नैचन. बट बिकॉज ऑफ दैट ब्लास्ट वेयर यू नो सेटा सब इंफॉर्मेशन अछि तो कोर्ट सेटा जनरली मानिबे ऑल्दो एटा लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस नुह. तो इंडिया रे एई जिंसटा ओके आर एक्सेप्शंस अछि बट इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिका आपण को जदी इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस आपण पाउचंती ताले तार गोटे बेस्ट एग्जांपल है डीएनए. You know that unless the court says okay DNA evidence आपण जबरदस्ती जण कोट नै परिबे यूएस रे स्पेशली. तो तुरंत पुलिस आसला कि आपण कोऑपरेट करंतु ब्लड टेस्ट करंतु कि आपण सलाइवा स्वाब करंतु जहा भी गोटे करंतु कि मना कर दे मु कोऑपरेट करबिन. आ कोर्ट भी तांकर पर्सनल राइट ऑफ द यू नो लोकन को पर्सनल राइट से पसी कोनी कि तुम जहा भी हेले करियो. ठीक अछि, ताले एबे इन्वेस्टिगेटिंग टीम से माने करिवे कोन तो से माने को करंती से माने वेट करंती. ओके तो लेट्स से गोटे रेस्टोरेंट को गला सेठी कोन गोटे खाइला. ठीक अछि, कोन पीला ओके जाउची खाउची कि पिउची जा भी तार सलाइवा रहिला सेतरे से तापर प्लेट टाको डिस्कार्ड करी कि पळेला पकई देला ताको डस्टबिन रे एमाने डस्टबिन रे उठे दे. ठीक अछि, सेटा हैला लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस. से तो वंस डस्टबिन रे पकेला तार ओनरशिप सरी गला. ओके आ सेइते तापर तार जो लागि थिबो जहा डीएनए सैंपल मिडिबो तार स्पीड रू कि तार जहा भी ओके तो सेथुरु से माने डीएनए प्रोफाइल बार कर देबे आ तो मैच कर देबे. बहुत लोक एमती धरा पड़ती सेठी. ओके कारण एटा हैला दिस इज लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस हैला. तो एनीवे इंडिया रो केस रे जदी हम कहल जे लाइक आई टोल्ड यू इंडिया रे ई सेम जिंस जदी इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस अछि ओके ताहले सेटा एडमिसिबल जनरली होबनी बट तारो एक्सेप्शंस अछि ओके व्हिच वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट. बुझि पारले दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एविडेंस. एविडेंस रो किछिटा एसेंशियल एलिमेंट्स हम कहि परिबे. ओके so now you take 2 minutes and just read through it. okay 2 minute देखंतु आपण कोन लिखि चंती जदि को पॉइंट ता बुझी पार नांती then let me know else we will go to the next part. okay तो generally evidence माने कोन बुझी पारले evidence रो characteristics कोन बुझी पारले. okay एबे हमें आसीबा both हमर एविडेंस एक्ट आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ओके एक्ट आउ अधिनियम जोटा हमें कहू तापरे बाकी गुड़ा आपण कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंडियन पिनल कोड ताकू कहले आपण संहिता बीएनएसएस. ओके बीएनएस ताले संहिता आउ अधिनियम भितर डिफरेंस कोन रहला एटा एथरक माने 2023 इंटरव्यू रे भी पचराई पिला को लास्ट ईयर भी पचराई तो तारे कॉन्सेप्चुअली हमें ठीक है क्लियर होबा ता ऊपर. तो टेल मी गो थ्रू दिस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन टेल मी. ओके कोटा भी बुझी पार नांती जदी ताले मते पचरन. सर हां कोंतो सर रेलेवेंसी और मटेरियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स देचंदी तो जरे डिफरेंस टा कहबो. मटेरियलिटी आउ रेलेवेंसी. मटेरियलिटी माने सी हम कहू ना मटेरियल एविडेंस. ओके यू हैव हर्ड दिस फ्रेज मटेरियल एविडेंस. मटेरियलिटी माने हां मटेरियलिटी माने व्हाटएवर एविडेंस यू आर प्रेजेंटिंग ओके इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द केस
and should influence the outcome. ଯେମିତି କି let's say ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ fraud ର okay economic offense ର ଗୋଟେ ଆପଣ case ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ fraud ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ fraud କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। materiality ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ statement ଦେଖଉଛନ୍ତି, right? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ material evidence, okay? It is showing that there is some kind of a financial fraud, okay, and it is material evidence, right? Relevancy Yes. ରେ କଣ ହଉଛି, relevancy ରେ କଣ ହଉଛି, first part ଟା ହଉଛି right? Directly it should be related, okay, जो facts गुड़ा हमारा dispute रे अच्छी, से facts संगे directly relate हवा कर, okay? तो गोटे let's say गोटे कोड़ी murder ही से murder scene पाखरे, okay, गोटे छुरी टे पड़ी, ठीक है, blood stained knife is there, तो सेटा relevant evidence हवा, ठीक है। एबे तापरे डीएनए टेस्टिंग पर जणा पड़ुची कि नाही सेतरे ब्लड जो लागि छि सेटा ह्यूमन ब्लड नुह, सेटा को एनिमल रा ब्लड, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। किंतु जेतेबेले प्रथमे आपण सेटा नौचंती, ओके, दैट पर्टिकुलर एविडेंस इज फाउंड, तो सेटा इट इज अ रेलेवेंट एविडेंस केना काई के रेलेवेंट हेगला काई ना सेटा क्राइम सीन पाखरे मिली, ओके। तो दीटा पार्ट्स होची, गोटे हला इट शुड बी डायरेक्टली रेलेवेंट, जोटा की रेलेवेंस रे इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट्स इन इश्यू, जो फैक्ट्स जो डिस्प्यूट अच्छी सेटा हला नंबर 1। और मटेरियलिटी रे सेटा तो रहबा कथा डायरेक्टली रिलेटेड, ओके, टू द केस, तापरे इट शुड इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द केस आल्सो, ठीक अछि। से Yes. दिटा दिन आपण माइंड रे रखि परिबे, ओके। नाउ Yes, sir. लेट अस, ओके फाइन, आउ कोन डाउट अछि पचरंतु। अच्छा, so let us come to the question, or let us come to the difference between अधिनियम and संहिता, ठीक अछि। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन थिला एटा गुरु, इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके। तापरे बाकी दीटा जो चेंज होला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ओके, एंड इंडियन पिनल कोड, ठीक अछि। कोड वर्ड टा यूज हिच, ताकू हमें संहिता बोली कहू। तो तारो रीजंस कोन, दैट वी विल सी। गोटे इंटरेस्टिंग जिंस हला कि इफ यू सी द बेयर एक्ट्स, सेथरे आपण गोटे जिंस पाइबे कि तारो अल्टरनेटिव इंग्लिश किछि दिया हिनी, ओके। ताको आपण इंडियन एविडेंस एक्ट कोना, सेटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस भी कि एटा गोटे स्पेशली सदर्न स्टेट्स रे गोटे इश्यू हिची कि सेटा आपण तार गोटे अल्टरनेटिव नेम ना रखि नांती। तेणु लेट्स से हमें एबे तमिलनाडु रो कोर्ट्स रे कि कर्नाटक रो लोअर कोर्ट्स रे कि हाई कोर्ट रे, सेठी जेतेले हमें एबे काम करिवु, वी हैव टू रेफर टू दिस अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक अछि, बीएसए हमें कहबु त। तो से माने एलेज करचोंदी कि एटा गोटे कोवर्टली, कोवर्टली माने लुच्ची छपिकी, कोवर्टली माने सीना तान के डायरेक्टली, हैला, कोवर्टली, COVERTLY, कोवर्टली आपण लुच्ची छपिकी हिंदी टाको इंपोज करचोंदी सबकॉन्शियस माइंड रे लोकंगर। तो समस्त कहबे अधिनियम संहिता, अधिनियम संहिता, तो सेटा आस्ते आस्ते दे विल बी यू नो हिंदी टा इंटरनलाइज हिजो, ठीक अछि। जो लैंग्वेज वार एबे चलछि, तो किछि नुवा नुवा, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट एई जिंसडा जो करावा, राइट। So now we will discuss what is the difference between this adhiniyam, okay, and your, okay, जोटा में कहूँ संहिता, that means the difference between act and code, okay। ताको जोटे question answer form रे आपण भी करि परिबे, so you can take down a question that what are the differences between adhiniyam and संहिता, okay। सर तो प्रथमे तो खाली हमें हाँ कहंतु। सर आम कैरेक्टरिस्टिक्स रे जदि आम एक्शनेबल कि नहीं एटा आम ऐड करि परिए कि एडमिसिबिलिटी इज इक्वल्स टू एक्शनेबल।
admissibility is equals to say materiality of the evidence जोटा कहउचंदी ना से जिनसरा means actionable माने कोन ओके actionable evidence माने जहाँ ऊपर basically गोटे कोर्ट आउ ये एक्शन नहीं परिवे बस it should influence the outcome जोटा कि materiality रे हमें सेटा ही कहलु कि directly connected to the case थिबो how it should influence the outcome okay ओके so ओके materiality of the evidence ओके टर्म टा अलगा जस्ट अछि बट मीनिंग टा हमरो सेम ही रहउछ मिनी आज्ञा जहाँ भी आपण आणुचंती एविडेंस सेटा आपणकर इट शुड बी एबल टू ओके व्हाटएवर अफेक्ट द फाइनल आउटकम ठीक अछि ओके सर so now you take the differences गोटे गोटे कहूची ताको लेखंतु अधिनियम और संहिता तो प्रथमे तो अधिनियम which is act केमती हबो you know the process of law making in India this is through enactment parliament करि पारे आपणकर स्टेट लेवल रे असेंबलीज करि पारंती विधानसभा करिका आउ लोअर लोकल लॉज गुडा सेडा जो म्युनिसिपैलिटीज हले पंचायत हले ओके सेमिति भी से माने तो एक्ट बेसिकली ओके इज अ लेजिस्लेटिव एक्शन राइट तो ता माने कोन एटा लिखि दियंतु नंबर 1 दिस इज बेसिकली एनैक्टेड आउ सेकंड ता हला इट इज कोडिफाइड तो एटा हला एनैक्टमेंट एटा कोडिफिकेशन संहिताटा हला कोडिफिकेशन ओके तापरे सर लेखंतु एक्ट अच्छा सर संहिता ना अधिनियम टा अधिनियमटा हला एक्ट तो ओके हमें जो एक्ट लिखिबु दिस इज बेसिकली एनैक्टमेंट बोली लिखिलु तो बस तार जो एगेंस्ट रे तार अधिनियम इज कोडिफाइड बोली लिखिबु हाँ अधिनियम लिखे कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन कोड ना संहिता इज कोड ओके सो कोडिफिकेशन संहिता जोटा आपण लिखुचंती सेठी आपण कोडिफिकेशन लिखिले तो एठी नंबर एटा एक्चुअली पॉइंट नो एटा खाली बेसिकली को मोड रे सेटा हेची सो दिस इज बेसिकली ओके योर एटा लेजिस्लेट कराइची ओके इट हैज बीन लेजिस्लेटेड कोनोसी गोटे लेजिस्लेचर रे कि पार्लियामेंट रे सेटा लेजिस्लेट कराइची तो सेठी आपण एनैक्टमेंट लिखिबे एक्ट रु एनैक्टमेंट ओके आउ एटा कोड रु हला कोडिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट ओके तापरे आसंदु दिस इज नंबर 1 सेकंड हला नेचर ओके सब हेडिंग हला नेचर अंडर रे दीटा को जदी हमें देखिबा व्हाट विल बी द नेचर तो एक्ट टा जनरली जेतु एनैक्टेड हेची कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा माने सेटा आपनकर लेजिस्लेचर रे पास हेची सेंट्रल लेजिस्लेचर हो कि स्टेट लेजिस्लेचर हो तेनु इट इज स्टैंड अलोन ओके इट इज स्टैंड अलोन इन नेचर स्टैंड अलोन माने ताकू आउ कार्यकारी हो पे आउ ता संगे रे आउ गोटे किछि ता संगे रे आउ गोटे किछि सेमति दरकार नै सो इट इज स्टैंड अलोन ओके आउ इतरे जनरली आपण नुवा जिंस भी किछि इतरे ऐड करूछंती तो नेचर रे लिखिबे स्टैंड अलोन ठीक अछि आरो नेचर रे कोन व्हाट इज द नेचर ऑफ ए कोड आमे यदि हिस्ट्री देखिबा आपण ऑलरेडी सर तो बीएनएस सारिथिले एबे बीएनएस पढुचंती हिस्ट्री रे आपण देखिबे एगुडा आगुरु एक्जिस्टिंग केते गुडे आपणकर ओके रूल्स करिका थिला ताको मिसे देखि आपण कोडटा करछन ठीक अछि सो अर्लियर वेरियस पीसेस ऑफ ओके such documents were existing or such okay codes were existing you have brought all of them together to make a code ठीक अछि तो सेथरे लेखंतु take down in that compilation of existing laws compilation of existing laws compilation of
existing laws. Okay, तापरे थर्ड को आसंतु एटा बुझी परले तो go to the history of CRPC and IPC हैला तो सेगुडा एमती हठात कि नुआ आसी गलानी से आगुरु केते गुडे जिंस को मिसे को केते गुडे जिंस को मिसे माने कोन सेमती को गले एटा हमें काली क्लास रे देखिबा हिस्ट्री ऑफ एविडेंस आमर कोन एविडेंस एक्ट सीधा आसी गला ता आगुरु किछि नथिला एविडेंस में ओके ता आगुरु भी थिला हां एते ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म रे नथाई पारे बट थिला से ब्रिटिश इंडिया रे ही थिला व्हिच वी विल स्टडी टुमारो द हिस्ट्री ऑफ एविडेंस इन इंडिया राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड ओके एंशिएंट पीरियड रे आपण एविडेंस रो हिस्ट्री देखियो बहुत गुडे अछि फॉर एग्जांपल आपण यू नो दैट द फेमस बुक रिटन बाय चाणक्य और कौटिल्य कौन कौन बही से लिखथिले एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस ऊपर अर्थशास्त्र ना सुनिछंती अर्थशास्त्र ओके सी प्राइम मिनिस्टर थिले मौर्य डायनेस्टी रो ठीक अछि तो सी लिखिले तांगर तापरे सबु डायनेस्टी रे एमती लॉ गिवर्स माने थिले ठीक अछि सेटा गोटे बहुत बड़ डायनेस्टी थिला एंशिएंट इंडिया रे मौर्यन डायनेस्टी अशोक आस्थिले सेटू चंद्रगुप्त मौर्य आस्थिले अशोक आस्थिले बड़ बड़ राजा माने थिले तांको परे गुप्त माने आसिले ओके तांको परे बहुत अलग डायनेस्टी आछथि किंतु बड़ डायनेस्टी जोडा ऑलमोस्ट इंडिया और इंडिया बाहर भी रूल करछथि हला गुप्त ठीक अछि तो गुप्त डायनेस्टी तांकर जे प्राइम मिनिस्टर थिले तांको ना थिला कुमंडक तो कुमंडक से लिखिथिले नीति सार ठीक अछि दैट वाज अनदर बुक तो सेगुड़ा सेबेडू अच्छी आमर एमती नुह कि ब्रिटिश आसिक आमको देदेले ब्रिटिश मानकर जेतेबेले सिविलाइजेशन रो सी भी जान नथिले ए सब जिंस हम पाखे थिला ठीक अछि तो सेईटा भी देखिबा तापर मेडिवल इंडिया रे जेतेबेले मुस्लिम रूल स्टार्ट हैला तो सेतेबेले देखिबा केमती कोड आउ कोन सब व्यवस्था थिला तापर ब्रिटिश इंडिया को हम आसीबा तापर इंडिपेंडेंट इंडिया को आसीबा बुझि परले सो सेकंड पॉइंट रे लिखंतु नेचर ऑफ द अधिनियम इट इज जनरली स्टैंड अलोन ओके whereas in case of code or संहिता it is compilation of existing laws ठीक अछि एगुडा हमें जनरल डिफरेंसेस गुडा देखुछु एथरे हमें किछि एक्सेप्शंस भी बाहर करी पारु ठीक अछि तापर लेखंतु नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 दैट इज द स्कोप स्कोप कोन ओके अधिनियम रो स्कोप कोन संहिता रो स्कोप कोन तो टेक डाउन अधिनियम के एक्ट अंडर रे लिखंतु नैरोअर एंड फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ पर्टिकुलर एरिया इंडियन एविडेंस एक्ट इट ओनली डील्स विद एविडेंस आउ किछ नहीं ओके बट जोटा संहिता इंडियन पिनल कोड से एनी टाइप ऑफ क्राइम ओके संगे डील करची चोरी संगे जण के चटकणा मारले ता ऊपर भी डील करची मर्डर ओके रेप गैंग रेप सब ऊपर डील करची तेणु कोन तार कवरेज टा ब्रॉडर अछि वाइडर रेंज रे अछि ओके सो लेखंतु नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग हला स्कोप ओके that is point number 3 heading is scope take down under act under adhiniyam lekhantu narrow and focused on a particular area of law narrow and focused on a particular area of law narrow and focused on a particular area of law right tapore संहिता रे लेखंतु कोड रे broader and covers wide range of related legal provisions ही खाली आपण से आपण निज भाषा लिखे खाली एटा हला narrower ओके फोकस कार एक्ट रो अधिनियम रो से पर्टिकुलर एविडेंस ऊपर ही से कहूची आउ किछि इनका ऊपर कहनी whereas कोड दा बहुत वाइड रेंज को कवर करिवो ओके तो खाली गोटे गोटे एथरे गोटे फ्रेज लिखि दियंतु ओके एक्ट अंडर रे की अधिनियम अंडर रे लिखंतु narrow and focused on particular area of law आउ कोड अंडर रे की संहिता अंडर रे लिखंतु ओके ब्रॉड एंड कवर्स तो ब्रॉड स्कोप तार ठीक अछि ब्रॉडर स्कोप एंड कवर्स वाइडर रेंज ऑफ लीगल प्रोविजंस ठीक अछि एटा हला नंबर 3 दैट इज स्कोप बुझियला पर्यंत एबल टू अंडरस्टैंड Yes, sir. नेक्स्ट okay next
come to the structure. Okay, structure more or less dite jako बहुत different तो हमें कहि परिबानी गोटे act आ गोटे code रो structure, but still then structure उपरु नै कि हमें तारो differentiation भी करि परिबा. So number 4, take down structure. माने arrangement केमती हेछि तारो. Okay, how it has been arranged, that is what we mean by structure. तो लेखंतु act under रे it divided into sections, subsections and clauses. Divided into sections, subsections and clauses, arranged chronologically. But chronology तार अछि ठीक अछि आ परे या logical हेतिया दरकार, right? Divided into sections, subsections and clauses, arranged chronologically. अच्छा, what is the source जो आपण कहूची एटा कोठु आसिला? Okay, basically you see गोटे बहुत बढ़िया सोर्स आपणकर लीगल ऑथेंटिक लीगल डॉक्यूमेंट्स रहला सब स्टेट्स रो. ओके, जो एकेडमीज गुडा अछंती जुडिशियल एकेडमीज करिका एटा मु पंजाब और हरियाणा स्टेट जुडिशियल एकेडमी रो ताको वेबसाइट रे अवेलेबल अछि, आपण निजे भी डाउनलोड कर दे परिबे. ओके, सो माने नेट रे हजार जिंस मिलुची किंतु सब बेले गोटे कोन कहबा हमें गोटे ऑथेंटिकेटेड genuine जगह रु आपण मटेरियल टा पढिबे ताले भलो. ओके, so divided into sections, subsections and clauses, arranged chronologically. Okay, अधिनियम अंडर रे एक्ट अंडर लिखले, कोड अंडर रे सेटा लिखंतु सेम जिंस ही अछि, एथर बेसी डिफरेंस नाही. Divided into parts, chapters and sections. Divided into parts, chapters and sections, organized systematically and logically. Organized systematically and logically. Okay, तापरे नेक्स्ट हला ऑब्जेक्ट और पर्पस. कौन पाई से एक्ट टा की से कोड टा कराई, पर्पस और ऑब्जेक्ट. सो एक्ट अंडर रे कि अधिनियम अंडर रे लिखंतु टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज. एटा हला मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस टा, एई डिफरेंस टा आपन को प्रॉपर्ली बुझिबार अछि. टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज, कॉमा amend existing ones, amend existing ones or repeal outdated legislation, or repeal outdated legislation. Hello, to introduce new laws, amend existing ones or repeal outdated legislation. देखिए later, that is the purpose of अधिनियम और एक्ट. संहिता की कोड रे देखंतु एटा ऑलरेडी हमें कहिछु कोन एक्जिस्टिंग लॉ अछि त खाली अपन कोडिफाई करछन, अमलगेट करछन, so that से गोटी जगह रे सब आछो. ओके, so under code or under संहिता write down to consolidate. consolidation माने कोन? लैंड होल्डिंग रो कंसोलिडेशन करछन, माने अलग अलग जगह रे अछि गोटी जगह को कोन अमलगेट करछन त गोटे सेंस. to consolidate and codify existing laws. हला एथरे दीटा मेजर जिंस अंडरलाइन करिवे कोन ना, एठी जनरली कोन होची एक्ट रे न्यू लॉज आपण आनुचंती किबा एक्जिस्टिंग वन ताको आपण अमेंड करचंती कि रिपील करचंती. ओके, कोड रे जनरली कोन हुए टू कंसोलिडेट एंड कोडिफाई एक्जिस्टिंग लॉज. और तारो मेन इंटेंशन कोन? फॉर बेटर क्लैरिटी, accessibility and coherence. Okay, for better clarity, accessibility and coherence.
for better clarity, accessibility, and coherence. देखिले तापर किछिटा एग्जांपल्स तार नियंतु सो नेक्स्ट और जो सही तरह ही अपना एग्जांपल्स किंबा यू कैन टेक द नेक्स्ट पॉइंट एज एग्जांपल्स ओके केतेटा जायथिला हमरो पांचटा सो दिस इज नंबर 6 एग्जांपल्स लिखंदु सो दैट एग्जांपल्स अपन निजे दे परिबे राइट कोन हबो लॉ और एग्जांपल ओके जहाँ भी गोटे आपण धरंतु इनकम टैक्स एक्ट हे गला ओके टीपी एक्ट लिमिटेशन एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हे गला मोटर व्हीकल्स एक्ट हे गला सो मेनी एक्ट्स आर देयर ठीक अछि तापरे नेक्स्ट आसिला आपनकर कोड रे सो इंडियन पिनल कोड ओके आईपीसी सीआरपीसी कोड जोड़ा आपण लिखि परिबे ठीक अछि तो दैट एग्जांपल्स यू कैन गिव तापरे नेक्स्ट आसिला अमेंडमेंट हाउ these codes and the act will be amended तेणु नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु नंबर 7 amendments अच्छा आपण देखिथिबे जेतले आपण सीपीसी पढुचंती कि जेतेबेले आपण ओके अलगा कोनोसी कोड पढुचंती सेठी गोटे जिंस देखिबे देखाइथिबो तळे स्टेट अमेंडमेंट्स राइट से गुडा लेखाइथिबो सो केते केते जगह रे ऑपरेटिव पार्ट्स हरिका इन सम केसेस ओके कोड्स भी ताकू चेंज करि परिबे किंतु एक्ट डाकू बनेछि कि इट हैज बीन लेजिस्लेटेड it has been enacted by the legislature तेणु ताकू अमेंड करिवो ओनली लेजिस्लेचर सो अधिनियम अंडर एक्ट अंडर लिखंतु amended through separate amending acts okay let's say particular income tax amendment act ठीक अछि से टाइप रो आपण कहि पारि amended through separate amending acts आ कोड रे किंबा संहिता रे लिखिबे amended through specific provisions within the code itself से थरे थिबो कि केमति कोन अमेंड करिवार अछि amended through specific provisions within the code itself amended through specific provisions within the code itself okay तापर आसिला आपनकर इंटरप्रिटेशन नंबर 6 इंटरप्रिटेशन এটা কেতে হবে নাম্বার 8 হবে এটা इंटरप्रिटेशन नॉट 6 इंटरप्रिटेशन लॉ टा केमती इंटरप्रेट करा हुए और कोड टा केमती इंटरप्रेट करा हुए ओके सो इंटरप्रिटेशन तो हमें देखिथिलु कोन एक्ट टा सेटा गोटे इंडिपेंडेंट पीस ऑफ ओके आपनकर दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ओके सो ताको इंटरप्रिटेशन भी इंडिपेंडेंटली ही करा हुए सो टेक डाउन इट इज इंटरप्रेटेड इंडिपेंडेंटली considering its specific provisions interpreted independently considering its specific provisions and legislative intent
interpreted independently considering its specific provisions and legislative intent. Legislative intent अर्थ हला कि legislature को एम रे से एक्ट टाको बनैथिला ताको एतले इंटरप्रेट करिवे कोर्ट्स से legislative intent टाको देखि कि से इंटरप्रेट करिवे इंडिपेंडेंटली सेटा इंटरप्रेट हबो माने से आउ को लॉ संगे रे लागि कि नथिबो राइट तापरे संहिता को आसंतु कोड को interpreted in conjunction with other provisions within the code. Okay, interpreted in conjunction with other provisions within the code and related legislation and related legislation. Interpreted in conjunction with other provisions within the code and related legislation. Next, application. Where it will be applied. Application. It applies to specific situations. Okay, applies to specific situations and circumstances. Applies to specific situations and circumstances covered by its provisions. Covered by its provisions. Okay, specific situation data applies to specific situations and circumstances covered by its provisions. Code re eta is scope bole hi eta application ta taro code re or संहिता re applies to broader range of situations. Applies to broader range of situations and circumstances related to the subject matter. Applies to a broad range of situations and circumstances related to the subject matter. Okay. तापरे नंबर 10 लिखंतु प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस कोन जदि आ गोटे किछि लेखा हि जी गोटे जगह रे और इठी आ गोटे किछि लेखा हि ताले कोन हबो कोटा प्रेसिडेंस नबो. So take down point number 10 precedence. Okay, so act किंबा अधिनियम अंडर लिखंतु may override or modify existing laws on the same subject. May override or modify existing laws on the same subject. May override or modify existing laws on the same subject. Then under code, okay, संहिता under लिखंतु usually consolidates existing laws. Usually consolidates existing laws without necessarily overriding them. Usually consolidates existing laws without necessarily overriding them. Without necessarily overriding them. Okay. तापरे लास्ट पॉइंट लिखंतु पॉइंट 11 ऑब्जेक्ट रे हमें ऑलरेडी देखिजु एटी लेजिस्लेटिव इंटेंट मींस व्हाट द लेजिस्लेचर ओके जो लेजिस्लेचर जोटा तांकर इंटेंशन कोन एक्ट बनैबारे आ कोड रो इंटेंशन कोन ठीक अछि. सो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव अंडर किछटा हमें देखिजु. नेक्स्ट वी विल सी लेजिस्लेटिव इंटेंट. तो पॉइंट नंबर 11 लेजिस्लेटिव
intent. ता अंडर लिखंतु focuses on addressing a specific issue or concern at the time of enactment. Focuses on addressing a specific issue or concern at the time of enactment. Okay, focuses on addressing a specific issue or concern at the time of enactment. एटा act under अधिनियम under लिखन. Code under लिखिबे aims to create a systematic and comprehensive legal framework. Aims to create a systematic and comprehensive legal framework for a particular subject area. For a particular subject area. Okay, एटा हला किछिटा डिफरेंसेस आपण संहिता आउ अधिनियम भितरे. एटा ये रे पढिबार चांसेस कम रिटन एग्जाम रे इंटरव्यू रे पढु प्राय समस्त पचाउछन एटा. तो जदि मु 11टा पॉइंट कहबी नाही तीटा आंसर दीटा ही कहयार अछि. फर्स्ट हला स्कोप एक्ट टा टिके स्पेसिफिक रहइबो. ओके एक्ट टा टिके स्पेसिफिक रहइबो. कोड टा ओके सेटा तार स्कोप टा ब्रॉड रहइबो. ठीक अछि. बट सेकंड इंपोर्टेंट एटा हला फर्स्ट डिफरेंस कहबे. सेकंड इंपोर्टेंट डिफरेंस कोन बिटवीन ए एक्ट एंड ए कोड दैट इज द मेन एम. एक्ट रे कोन कि जोटे नुवा जिंस आना होची सेटा सेपरेट और इंडिपेंडेंट. ओके एक्ट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट. इट इज एनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर. whereas कोड रे कोन होची ना प्राय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओके रूल्स करिका जोडा इयाडे सेडे अछि गोटी जगह रे ताको आना होची. ओके तेणु से बहुत गुडे जिंस हो जाउछे. ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस को से डील करछ. एई दीटा मेजर तार डिफरेंस. बाकी जो डिफरेंस बा एगोडा रिटन एग्जाम पे जे तुम गोटे गोटे इवन गोटे गोटे छोटिया जिंस रे भी डिफरेंस बाहर करके लिखिया पड़िबो सेति पई कुआ वाला. नहले एईटा फंडामेंटल दीटा डिफरेंस. स्कोप टा ठीक अछि. तो वन इज द स्कोप अदर इज द एप्लीकेशन. ओके सो this is basically your difference between adhiniyam and संहिता or act and code. चला अच्छा. now you come to next part जोड़ा कि हमें देखिबा काली बीएसए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक अछि. तो ता ऊपर किछिटा इंपोर्टेंट जिंस देखिबा कोन ना बीएसए रो ऑब्जेक्टिव्स कोन सेटा तो हमरो स्टैट्यूट रे भी देछि. Okay, what are the objectives of the BSA? ठीक है. As compared to the Indian Evidence Act, जाको हमें शॉर्ट रे आईईए बोली कहबा. तो आईईए अपेक्षा आरो एमती कोनटा किछटा ऐड हेतिबो ना राइट. तो सेही जिंसटा हमें देखिबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएसए. तापर हमें देखिबा कि मेजर चेंजेस कोन हिच. ओके कंपैरिजन बिटवीन बीएसए एंड आईए. मेजर चेंजेस तो बहुत माने सेक्शंस लेवल रे तो बहुत गुडे चेंजेस हिच. सेटा हमर दरकार नै. ओवरऑल चेंज कोन हिच. ओके द इंपोर्टेंट चेंजेस से गुडा में देखिबा. दोस पार्ट्स वी विल सी टुमारो. ओके गुडा कहितली टिके हमें बीएसए ऊपर ओवरऑल गोटे व्यू नै कि देन वी विल गो टू द सेक्शन वाइज एनालिसिस. बुझि पाले. नाउ you go through what you have written. जहाँ आज हमें पढ़िलु ठीक अछि ता रिलेटेड some questions we will solve. फंडामेंटल questions. ठीक अछि. फंडामेंटल questions हमें किछटा सॉल्व करियो. राइट. सो यू प्लीज गो थ्रू. आपण प्रथमे टिके देखि दियंतु जा लिखिछन सेते जदि किछि डाउट अछि.
yes any doubts जोड़ा बुझी पारलेनी डिफरेंस रे हो कि अलगा जहाँ भी आज आपण पढ़ले डन ओके ताले हमें किछटा बेसिक क्वेश्चन जहाँ आज हमें पढ़िलु तारी ऊपर किछटा हमें डिस्कस करिबा okay I'll give you the questions then you tell me what your answer is unmute your mic jon jone करके कहबे सेटा okay so this is our first question so these are आज तो हमें सेमिति बेसिक किछि you know sections आलू को जाइन तो फंडामेंटल क्वेश्चन थोड़ा okay जदि आपण ठीक रे सुनी जंदी ताले आपण आंसर करि परिबे take the first question what is the primary characteristic of evidence in a legal proceeding हमें characteristics देखि तो तार सब primary characteristic ता कौन हबा कथा okay that is the question right maybe there are more than one characteristics आ भितर किंतु primary characteristic of evidence in a legal proceeding ठीक अछि first option आपन को से देछि it must be legally obtained and relevant to the case it must be presented only in written form it must always be direct and conclusive it must be collected by law enforcement agencies only कौन होगा आंसर A, sir. A, sir. Yes, sir. A. okay so the correct answer actually would be A right आउ जने कौन कहते C it must be direct and conclusive शुणु सबू आम देखा टाइप्स ऑफ एविडेंस रे सबू एविडेंस गुड़ा कनक्लूसिव नुह ठीक अछि तो किछिटा एविडेंस आपण कोरबोरेशन पई यूज हुए ताकू यूज करिकि आपण गोटे कनक्लूसिव ओके स्टेज को रीच करिवे किंतु से माने इन इट्स देन इन देमसेल्फ दे आर नॉट कनक्लूसिव एंड इनडायरेक्ट एविडेंस भी अछि बुझि पारले तो सो आ भितरु it must be legally obtained and relevant to the case see legally obtained ro mo indian law re आपन को exceptions देछि even if illegally obtained court generally ताको accept करंती जदि सेटा ओके ओटे general good पई अछि सोसाइटी रो भलो पई अछि and for furtherance of the okay natural justice and all ताले सेटा court मानंती okay but overall principle of एविडेंस कहूची आपनकर कोन ना एविडेंस ता लीगली ऑब्टेन हेतिबा दरकार ओके आउ रेलेवेंसी सेटा तो हला तारो कॉर्नरस्टोन सो ए विल बी द करेक्ट आंसर बुझि पारले सुनंदु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रो कांसेप्ट कोन अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रो आपन कोन ऐप रे मु कहि दोची एगुडा तो हमें क्लास वाइज करूछु तो जा पढा हला ता ऊपर पचरा हो से अलगा कथा आपनकर पकाबाकी 15000 क्वेश्चंस यू विल फाइंड in the prelims गोटे 15000 क्वेश्चंस अछि 15000 आ सेटा ना केमिति ताको दिया हिची ना आपनकर क्वेश्चन दिया हिची ता परे तारो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हिची ओके सो निजो फ्री टाइम में ताको जस्ट खाली पढिले भी आपण at least I don't want a single person not to qualify the prelims आउ जदि से 15000 टा क्वेश्चन आपण करिकि जाउछंती I can guarantee कि आपण प्रीलिम्स रे तो फेल हेबे तापरे देन इट बिकम्स ओके आपण को ऊपर तापरे डिपेंड करूची आपण को लेखा केते स्ट्रांग बनेचंदी तो मेंस रे आपण से हिसाब रे मार्क्स पाइबे बुझि पाले सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन ओके एटा सब फंडामेंटल क्वेश्चंस so this is the second question अवश्य एटा मु आपण को एक्सप्लिसिटली कहिनी बट एटा any law graduate should be able to answer second question which of the following is considered primary evidence okay under the law a certified copy of sale deed primary evidence
a handwritten copy of original contract, the original signed agreement between two parties, a photograph of a legal document. C sir. Sir, A. Sir, sir C. habo. So A. Original signed agreement between two parties. All Sir. other are A. copies sir. एटा एक्चुअली मु जेतु कहिनी कांसेप्ट ता प्राइमरी एविडेंस माने कोन जे आगुरु पढी चंती कि कांसेप्ट ता जानी चंती ओके दे हैव आंसर्ड करेक्टली सी विल बी ओरिजिनल signed agreement between two parties. What is a certified copy? Okay, it is a duplicate, it is a copy. Certify कराई ठीक अछि forged नो ठीक जिनसटा किंतु original signed agreement between two parties सेटा आपनकर प्राइमरी एविडेंस अंडर रे जिवो बट प्राइमरी एविडेंस मु आपनको टाइप्स ऑफ एविडेंस रे कहिनी सेटा काली किंबा काली भी एक्चुअली ए डिफरेंस बिटवीन बीएसए एंड आईए सेटा बहुत इंपोर्टेंट सेटा काली पूरा क्लास टा नहीं जिवो तो एगुडा टाइप्स ऑफ एविडेंस एंड ऑल ये आमे जाई परिबा थर्ड क्लास रो ठीक अछि तो सेते बेले मु कहबी प्राइमरी एविडेंस कोन आज जोटा भी कहउतले जने बेस्ट एविडेंस रूल कोन those type of things we will see in the third class. Okay, third class reta dekhiba. So our answer hela C will be the answer. Next, third question ko asantu. Again, eta mu just kali hint dechi kintu details se apno kahini. Under which condition is hearsay evidence admissible? जदि आपण को मने थिबो मु कहली तार किछिटा ओके एक्सेप्शंस अछि राइट गोटे मु कहली आपण को डाइंग डिक्लेरेशन तापरे आ गोटे कहली कि आपनकर ओके कोन जोटा कि एक्सपर्ट ओपिनियन करी कि और भी अछि राइट तो एठी देछि when the original witness is unavailable due to death or disability okay when it is given in an affidavit when a witness reports that someone else told them when the court considers it more convenient to accept second hand testimony. A sir. Okay, under which condition is hearsay A. A sir. evidence admissible? So that is A. Okay, eta general rules under re ame देखिबा ठीक अछि कोन जनरल रूल रे हला hearsay evidence is no evidence सेटा admissible हुएनी generally but exceptions are there ये ता भितरु गोटे exception कि लोक जदि आपन को नाही okay death हे जाईची in that case so that is question number 3 so A will be the answer तापरे question 4 टा देखंतु what distinguishes direct evidence from circumstantial evidence see the answers see the options ता भितरु कोन आंसर आपन लागुची कोंतु direct evidence from circumstantial evidence okay अच्छा मु गोटे जिनस कहूँ डिफरेंस कौन मु देखिली मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड़ीटा मारुचन ठीक अच्छे मु देखी शूट करिवार मु सेटा हला फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल रे मु जिम रो बाहरतले देखिली सेतले कॉरिडोर रे मिस्टर ए दौड़ दौड़ी जाउछन ताका हाथ रे गन अछि गन रो धुआं बाउछ ओके बाहर को गला को कॉरिडोर रे मिस्टर बी से तादर गुली बाची से पड़छन किंतु मु देखिनी मिस्टर ए को गुली चलेगार मिस्टर बी को ऊपर ओके सो डायरेक्ट एविडेंस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ओके तो व्हाट विल बी द आंसर जो माने ऑलरेडी पढ़ी चंती कोन A. Sir, A A sir. habo. A sir. A will be the correct answer direct evidence proves a fact without inference while circumstantial evidence requires inference एही केस रे देखंतु मु तो देखि से मारुची ओके तो सेठी आउ यू नो आपण केमती देखिले कोन चश्मा पिंथले आई हैव सीन राइट आउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोन कि सेठी इन्फरेंस रिक्वायर्ड हो कि यू नो जिम रु बाहरची विटनेस से देखि कि एक्यूज दौड़ दौड़ जाउची ता हाथ रे गन अछि गन रु धुआ बाहरची सेपटे गला बेलू आर साइड रे से विक्टिम से पड़ी ओके गुड़ी बाजिक से पड़ी तेणु एठी कोर्ट इन्फर करेंगे यही सर्कमस्टांसेस रु ता माने ये आ हाथ रे गनटा थिला गन रु धुआं बाहर थिला ओके जस्ट गुड़ीटा सुनिकी जने बाहर की आसी देखला कि ये दौड़ी की जाउची सबुडा
ओके तो एटा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एटा जनरली आपनकर टू पीस टुगेदर द एंटायर चेन आपण यूज करछन तो Sir, Hmm. sir, D option टा जो लिखा है circumstantial evidence cannot be used to convict an accused. It is also right cannot कहीं ना एटा circumstantial evidence टा only for corroboration use हुए हुए ओनली फॉर कोलैबोरेशन ओके तो एटा cannot एटा भी तो right अछि ना से कहू जे क्वेश्चन टा कोन से पचरनी कि व्हाट इज द अच्छा 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 okay sir यू so नो distinguish पचुछि okay स्टेटमेंट से again डिस्टिंग्विश sorry sir माने तार डिफरेंस से पचर लाइट ओके सो ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस